एक काम करिएगा शुक्र। Afternoon, all of you. Okay, so I just good afternoon everybody online. Also, Parmeet, Sambhavi, Mahendra, Divyanshi, and Devashish. Okay, just one thing there that I was finalizing it at the main office. So we have finalized it. What we will do is we will begin with your test series, the optional test series I mean. We will be starting with it from around 7th of June. All right, 7th June will be the first test and your preparation, 26th May को prelims हो जाएगा. और आपकी जो preparation classes हैं for the test series, for further mains and so on, those preparation classes will begin from 30th of May. All right, 30th or 31st of May, वो मैं तुम्हें inform करके रखूंगा well in advance, you don't worry. From 31st May till around 22nd August, you keep your time booked with me. All right, उसमें हर दिन नहीं बुलाऊंगा या रोज रोज डिस्टर्ब नहीं करूंगा, but we will have around 27-28 classes in those 70 days. All right, mainly discussing the test, discussing things, discussing more current affairs. जैसे अभी कुछ चीज़ों पे जानबूझ के चुप हूँ मैं आपको एक पेपर अपलोड करवा दूंगा, but I am quiet on PVTG, or I am quiet on say Janman Yojana, that is, or I am quiet on Vishwakarma scheme, and you know many such things. I am deliberately quiet on at the moment because your optionals are, I mean exams are in October, the optional paper. So I want to make sure that as long as we can know and or as delayed as we can make it, to make you know what all those things are. So I will be covering those things up with you, but I'm just waiting कि वो जितने और drag on हो जाए वो आपके लिए अच्छा है. जो इकोनॉमिक सर्विसेज दे रहे हो उनसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि उस वक्त में वो क्लासेस कर लेना. There'll be 5-6. They will not only be on Indian economy. There are multiple things I have planned, but thing is that I begin with your sessions either 30th May or 31st May. All right, that is what we will begin, discussing myriad things, but focusing on a lot of current affairs that we can do. So that is one. एक और बात रखोगे दिमाग में that whether you अभी economic services के लिए भी दिमाग में रखोगे, whether you are able to write the test or not, just make sure that you have at least seen the discussion and you have seen the model answers. That's very important. The economic services discussion I will begin from end March. That is when I'll begin with it. मैं एक काम और कर रहा हूँ for economic services people, so that only for Indian economic services people, so that in case you are preparing things and you want to do things earlier, तो मैंने क्या किया है कि जो पिछले बैच को मैंने इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ाई थी उनको बोल दिया है वो अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए, बोथ ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन. तो मैं आपसे क्योंकि इकोनॉमेट्रिक्स के लिए अगर बाद में भी मिलूं, अगर तुम अपने एंड पे तैयारी शुरू करना चाहते हो तो वो इकोनॉमेट्रिक्स के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो. सो दे विल अलाउ यू टू नो थिंग्स in advance. So that also we are planning to put up. Maximum by Monday odd it will be done. The way we are going right now, I think I should be done with your course by Wednesday. Whatever is in my mind right now, by Wednesday. But I'm still keeping Thursday in hand, that in case I'm unable to finish things on Wednesday, then Thursday is what one more day we can keep in hand. I will be in any case announcing it again, but please keep your Friday unoccupied. I think we can meet once for all the sessions that you are. एक मैंने पढ़ा था एक बार आपने ग्रुप पे भी लिखा था कि पार्टी रह गई हमारी तो किसी ने लिखा भी था कि अरे अब सर फेयरवेल में ही दे देंगे. तो मैंने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहा हूँ पिछले 1-1.5 महीने से. बट आई थिंक फ्राइडे देन इफ यू कैन फाइंड टाइम आउट एंड वी कैन हैव वन गुड मीट टुगेदर. बट वो कोर्स खत्म करके ही करेंगे ऑफ कोर्स. So after that, and I have told even people at Next IS, people in the office, that if they can come and join us for at least for half an hour, it will make some. Thank you, Munna. वहीं रख दो. मुन्ना एक काम और कर दोगे, मुझे एक लेमन टी दे दोगे प्लीज. Thank you. Okay. So when you talk about things again, so please keep these in mind. I will again repeat it, but just thought you should know about these right now. So after 30th May, be prepared. We will begin with our sessions and we'll go on like that. Your Zoom sessions with me begin from the next week, that is 4th March wala week. All right, the Zoom sessions will begin thereafter. Yesterday I had to rush a little early because there is again something that I am working upon. वो भी आप लोगों से ही related है.
नहीं, जब तक चीज़ें फ्रक्टिफाई नहीं होती हैं मैं मुंह नहीं खोलता हूँ. Once I complete things, only then I open my mouth. But I am planning something about further things for GS plus optional students. तो hopefully वो भी workout कर जो हो जाएगा. तो कल मुझे जल्दी जाना पड़ा था और आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा. कल मैं आपके क्लास के बाद रुक जाऊंगा, आप अपने डाउट्स मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं. All right. Today I'll have to leave a little early after the class because I have to again go and attend to few things. और दिक्कत बस यही है कि जो भी चीज़ मैं कर रहा होता हूँ उसमें मैं चाहता हूँ मैं हर जगह प्रेजेंट हो जाऊँ. अब वो थोड़ा प्रेशर डाल देता है. Nothing else. Anyways, let's see this. My wife was making fun of me today morning that old people don't realize they are getting older. So but anyways, I do realize that I can't work the way I used to 20 years back. But I have better brains than what I had 20 years back. So I think that compensates. But anyways, let's see this. When we talked yesterday, we talked till the National Food Security Act and so on. Could you tell me the last thing that you had written? Yes. No, so they expect you to write 30 words on asset creation. 30, 40 words. So that will be about what kind of asset creation used to happen before Mihir Shah committee and what kind of asset creation has happened after Mihir Shah committee. तो अगर तुम वही लिखने जाओगे तो तुम देखना 30-35. जैसे अगर तुम इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग चाहो तो ऐसे होगा जैसे what is मनरेगा. Alright, there is one. After you have discussed what is मनरेगा, then the second aspect is within that objectives of मनरेगा and with respect to asset creation and job creation. Then impact of मनरेगा on poverty alleviation in India. All right, positive, and then what can be done more. So first part, introduction, 20-30 words. Talk on asset creation and job creation, another 30 words. Then impact on poverty alleviation, around 70 words. All right, so that is your 130 words. Then talk about what further can be done in मनरेगा to improve both job creation opportunities and asset creation opportunities, another 70 words. And then conclude by saying that जबरदस्त क्विक तरीके से काम किया है मुन्ना तुमने, thank you. All right. Then another 25 words concluding that मनरेगा's objective should be not now in मनरेगा 2.0, the objective should be not only creating asset or giving jobs, the objective should also be training individuals, connecting it to other sectors so that the growth can be more holistic. जैसे तुम पढ़े होगे एक अशोक गुलाटी का भी आर्टिकल था जिसमें कहते थे आवास योजना से मनरेगा को कनेक्ट कर दीजिए. तो ये बातें तुम सजेशन में लिख सकते हो, फिर असेट क्रिएशन के सजेशन में ये ऐड हो जाएगा. हमेशा दिमाग में जब भी कोई क्वेश्चन देखो, और वो मैं सिखाऊंगा, खैर अभी तो तुमने पूछ लिया तो मैं बता रहा था, हर क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग पॉसिबल है इन गुड 225 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, 150. हमेशा ध्यान रखना लिखना 150 वर्ड ही है, 250 वर्ड ही है. उनकी स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए दिमाग में, इतने वर्ड में ये लिख दूंगा, इतने वर्ड में ये लिख दूंगा, एंड देन हाउ डू आई राइट इट डाउन. सो इट्स लाइक दैट. देयर इज वन मोर थिंग दैट आई कैन टेल यू फॉर दोज ऑफ यू हु विल क्लियर प्रीलिम्स. I have already talked to the office. My students who have cleared prelims will get free accessibility to my past year paper discussion videos. All right, that is an exclusive set of videos that lie, जहाँ मैंने past year papers 2013 से लेकर 21 तक के डिस्कस किए हुए हैं. तो अगर जैसे ही आपका prelims क्लियर होता है, मैं आपको उसकी accessibility दिला देता हूँ. All right, ये मैं हर साल करता हूँ और 22-23 का वीडियो में करंट क्लास के साथ डिस्कस करूँगा. दैट जो होंगे उनके साथ ही डिस्कस करूँगा. बट अदरवाइज अगर आप कहते हैं सर नहीं हम प्रीलिम्स नहीं क्लियर करें तो हमें नहीं मिलेगा, आप उसकी चिंता में मत पड़िए. मैं जब टेस्ट सीरीज़ करता हूँ तो जितने भी आपके ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लेता हूँ जो पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं. सो यू विल बी एबल टू कवर दैट in any case. But still, it's just a set of videos where I think it helps the past year students. I've got that feedback from students that those videos help them a lot in framing answers in the class and things and so on. So I'll just pass it on. But इसलिए कहता हूँ prelims clear करने के बाद, क्योंकि तब वो ज़्यादा sensible होगा तुम्हारे लिए. Alright, नहीं तो prelims अगर by ईश्वर ना करे, लेकिन अगर नहीं cleared है तो पूरा ध्यान लगाओ कि जो मैं टेस्ट सीरीज कर रहा हूँ और जो मैं क्लास में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो फिर पूरा अच्छे से करके ऑप्शनल पैक करके रख दो अपना. That should be the methodology. All right, I again repeat for just in case those of you who joined me late, we will begin with the test series in the first week June, around 7th or 8th of June is in my mind, depending on when do we have a Sunday around that time.
but 7th or 8th of June. And from 30th May, I will start your classes again. From 30th May till around 6th June, your training for how to write the test series, current affair topics, if something more has been added, everything I will be able to, I'll be willing to cover with you in those days. So those 7-8 days more will be used for covering a little bit more. जैसे अभी UPI transaction signed with say UAE और UPI transaction with France, मैं जानबूझ के इन पे अभी चुप हूँ क्योंकि ये और grow करेंगे आगे. There will be more that will come. So let the more come, and none of us are going anywhere. So we will sit down and do it all again. All right? ये आप दिमाग में रखेंगे, ऐसे चलते रहना है हमें, generally speaking. Okay, let's see this. एक बात और, अगर कहीं तुम अटकते हो या कोई दिक्कत होती है तो आप पढ़ते हुए मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कभी भी हेजिटेट नहीं करेंगे इन कंटैक्टिंग मी. ये मैं हमेशा ही बोलता हूँ, बट फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ और बार बार करूँगा, that always make sure that you contact me, you let me know, because unless you don't let me know, I won't know. मेरे में यौगिक पावर नहीं है, तो आप मुझे नहीं बताएंगे, मुझे नहीं समझ में आएगा. तो कहीं भी फंसते हो, कोई बात होती है, इवन प्रीलिम्स के प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में कहीं फंस रहे हो, जस्ट लेट मी नो दैट सर आई एम गेटिंग स्टक अप हियर, व्हाट कैन बी डन. सो एटलीस्ट वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन. मैं क्लास खत्म होने के बाद की जो आईईएस वाले लोग हो वो तो मिलते रहोगे. आईईएस में भी इंग्लिश और जीएस की क्लासेस मैंने पहले प्रोग्राम कर दी है, सो दैट क्योंकि उसमें मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो दूसरे टीचर्स हैं. सो आई जस्ट थॉट दैट इट शुड हैपन एज सून एज पॉसिबल. सो द इंग्लिश एंड जीएस क्लासेस विल बिगिन, एंड देन यू कैन हैव योर other classes with me that we'll do over the period. But that is how we will be driving home things. And again, मैं suggest करूँगा कि अभी मत देखना, लेकिन IES के जो environment की क्लास होंगी या जो माइक्रो की 1-2 क्लासेस होंगी, वो मैं ऑफलाइन के लोगों के लिए भी रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करवा दूंगा, तो अपने प्रीलिम्स के बाद देख लेना ज़रूर. ऑलराइट, अभी मैं जानता हूँ प्रीलिम्स इज ब्रीदिंग डाउन द नेक, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर दैट जो बेसिक बातें जितनी हैं सब हम खत्म कर लें. इसके बियॉन्ड ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, बट मैं बस इसमें बिलीव करता हूँ दैट द मोर वी डू बेटर ऑफ वी आर. आई हैव अ थ्योरी आई विल शेयर विथ यू. लक इज नथिंग बट द इम्पैक्ट ऑफ रैंडम एलिमेंट्स, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट. सो हाउ डू यू कंट्रोल रैंडमनेस? बाय कवरिंग लार्जर पार्ट ऑफ सैम्पल सेट. जैसे ये मान लीजिए आपका सैम्पल है. अब होता क्या है, जब हम अपनी कोई भी तैयारी करते हैं, मैं लाइफ की ही बात कर रहा हूँ, तो कंट्रोलेबल्स हैं, अनकंट्रोलेबल्स हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में है, कुछ नहीं है, तो हम कुछ ऐसे कवर्ड रहते हैं. तो फिर ये स्पॉट्स बचते हैं बीच बीच में, और ये होता है लक. तो ये हमेशा मैं इसी स्पॉट को हमेशा फिल करने में लगा रहता हूँ कि कोई स्पॉट ना छोड़ो. इफ थिंग्स कैन लुक रादर दिस, देन हाउ डज लक कम इन बिटवीन? अगर मैं ये करके पूरा इसको वाइट कर लूँ पूरा, तो लक नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी फिर. बट ऑब्वियसली वो पॉसिबल हो, थोड़ा डिफिकल्ट है करना, बट जितने हद तक स्ट्राइव करें. तो जब मैं आपसे बोलता हूँ मैं और क्लासेस लूंगा या और चीज़ें करूंगा, द पर्पस इज जस्ट दैट, मिनिमाइज द एलिमेंट ऑफ लक. सो यू मिनिमाइज द एलिमेंट ऑफ लक बाय मैक्सिमाइजिंग योर एफर्ट, कि वो रैंडम एलिमेंट्स ही कम हो जाए. आसान लैंग्वेज में समझा सकता हूँ. एक पेपर में 100 क्वेश्चंस टोटल बनते हैं, मान लो आप एग्जामिनर पूछते हैं उसमें से 10 और बोलते हैं आप अटेम्प्ट करो 5. अब ये सबकी चॉइस है ना, लेकिन जो 100 करके चला गया उसके साथ लक कोई रोल प्ले नहीं कर सकता. Somebody does all 100, then there is no luck in that exam. I'm prepared on everything. Now how do you beat me? The challenge happens when people say अच्छा 10 में से 5 करना है, तो पहले ही मैं 100 में से 95 तो कर ही दूँ इसको. अब ये वाला आता है, ये नहीं आता, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये कम ज़रूरी है करके हम एंड में क्या करते हैं, 30 प्रिपेयर करके जाते हैं और सोचते हैं अब 10 में से 5 अटेम्प्ट कर दूंगा. तो वहाँ तो मैसिव एलिमेंट ऑफ लक आएगा ही. तो यही बात है, बस लक इज जस्ट दैट. तो इसीलिए मैं तुमसे शेयर कर रहा था कि मैं दिस इज माई फिलोसफी ऑलवेज, इट हैज़ बीन दैट लक इज नथिंग बट रैंडम एलिमेंट्स, नथिंग बियॉन्ड देन दैट. तो रैंडम एलिमेंट्स के इम्पैक्ट को कम कर दो, लक का इम्पैक्ट कम हो जाता है, देन योर एफर्ट वर्क्स मोर. ऑल राइट, देन वी बिगिन विद दैट. अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? लेट्स ट्राई गेटिंग ऑन दैट. The element means, again, when we talk about the financial inclusion part, it means how you include people in banking structure, credit structure, insurance structure and pension structure. आप इन 4 चीज़ों में लोगों को कैसे include करते हैं, वो है financial inclusion. Including people in financial system. So when you give people banking accessibility, when you give people credit accessibility,
when you give people insurance accessibility and you give people pension accessibility. If these four accessibilities are available, then we say you have given people financial inclusion. Why is it important? It's important for two reasons. One, when people get financial inclusion, then their capability rises. If I have a bank account, then now direct benefit transfer can be done in my bank account. आप समझ रहे हैं, मेरे पास बैंक अकाउंट है, आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है, सब्सिडी मेरे बैंक अकाउंट में कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज बैंक अकाउंट इज माई फाइनेंशियल आइडेंटिटी. So financially you recognize me through my bank account. So it is my financial identity. Similarly, if I have a bank account, I can have some savings habit developed after that. So I can save for my emergency needs and all, and you can guide me in doing that. For the economy as a whole, if people have bank account, then people will put their savings, which will help in mobilizing even small savings in the market, which will mean much better money creation for the economy as a whole, mind you. That people can put even small savings in the market and much better investment possibilities, money creation, and so on. तो बैंकिंग इंक्लूजन के इंडिविजुअल के लिए दो फायदे. एक तो वो सेव करना शुरू कर देंगे, दूसरा उनकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बन गई, तो भले ही उनको सब्सिडी मिलना हो या ट्रांसफर मिलना हो, वो उससे मिल जाएगा. और कंट्री के लिए एक फायदा, दैट इट रिजल्ट्स इन मोबिलाइजिंग द सेविंग्स विच कैन बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट. देन कम्स फाइनेंशियल इंक्लूजन. मैं आपको लिखवाऊंगा कि इसमें स्टेप्स सरकार ने क्या लिए हैं. ये बातें बस बता रहा हूं दैट कैसे ये इंपॉर्टेंट है. क्रेडिट इंक्लूजन, अगेन इफ यू लुक एट, क्रेडिट इंक्लूजन मीन्स गिविंग एक्सेसिबिलिटी टू चीपर लोन्स एंड फॉर्मल लोन्स. That is credit inclusion, that you give people accessibility to cheaper loans and formal loans. सस्ता लोन मिले और फॉर्मल लोन मिले, तो उसे बोलते हैं क्रेडिट इंक्लूजन. अब इससे क्या फायदा है? पहला फायदा, if I get loan, I can be a first generation entrepreneur. So you promote entrepreneurship by promoting credit. You know, if people get loan, they can be first generation entrepreneur. So you promote credit, you promote entrepreneurship. Second, you promote credit, you promote research and development, because not everybody will have the money to buy equipments. But once you give credit, then that means even people who have knowledge but don't have capital will get capital to start using their knowledge. I am a living example of that. मेरे जेब में पैसे इतने नहीं थे कि मैं अपना रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश कर सकता था. जब MIT से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो लोन के पैसे से किया था. I didn't have that money. So if their loan was not available, I wouldn't have been able to set up my research center to do all my work for MIT. So credit can do that. That gives loan to promote R&D. The third thing that credit can do for benefit of individuals is that it can bring risk-taking element. I'm taking credit now. I can take a small risk to be an entrepreneur and try earning more. So it can promote risk-taking element with the credit that I am receiving. All right. For the economy as a whole, also, when you go for an economy based on credit, then you promote more competition also. You know, because credit will, availability of liquidity means more and more new firms, more and more entrepreneurship, so more competition, and therefore better technology, cost cutting, efficiency in the economy. All right, that is the credit thing that we bring in picture. That is the credit thing that we bring in picture. I hope we are clear on that. Then comes the third thing, insurance inclusion. That is making the premium cheaper, informing the people about insurance facilities, and making sure that more and more people are covered under insurance. That is called insurance inclusion. Now what does that imply when we talk about insurance inclusion? So what that implies is, जब हम insurance inclusion को बोलते हैं, that जैसे फसल बीमा योजना, जैसे जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जैसे से जन आरोग्य योजना. So what do? When you give people insurance, you allow them to continue with their risks, do new businesses, secured that if the business fails, still they will have a supply of insurance support and they won't be on the street straight away. कि मैं सड़क पे नहीं आऊँगा गड़बड़ होने से, मुझे एक इंश्योरेंस का सपोर्ट है, तो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मैं नए तरह की फसल बो सकता हूँ, आई कैन ग्रो न्यू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, आई कैन गो फॉर एक्सपैंडिंग माई बिजनेस, आई कैन गो फॉर बाइंग अ न्यू टाइप ऑफ मशीन. सो ऑल दैट इज अबाउट क्रेडिट इंक्लूजन एज इट कम्स अक्रॉस.
insurance inclusion, sorry. Also remember life insurance, health insurance, accident insurance. That gives people the confidence that, okay, I can keep working well. I will be able to help my family or myself even if something goes wrong. That is a very big X factor in life. That you are confident, you are working better because you know that I am protected by my insurance and my family is not in trouble and I will not be in sudden danger if something bad happens to me due to an accident or due to an illness. So that is what health insurance, accident insurance, life insurance have a power to do. They make you more efficient to grow. All right. So that is about insurance inclusion. अब इकोनॉमी को क्या फायदा होता है इंश्योरेंस इंक्लूजन में? सोचिए इंश्योरेंस का एक जबरदस्त सपोर्ट क्या है. When we take insurance, we save money for 30 years. We save money for 35 years, which means economy gets long-term savings, which can be used for long-term investment projects like infrastructure development. Infrastructure वगैरह के development के project को banks को कभी पैसा देना ही नहीं चाहिए. Infrastructure development के लिए companies को क्या करना चाहिए? 30 years का bond लाइए, 20 years का bond लाइए, because you can't make an infrastructure project for anything less than this time period. आप एक पोर्ट बनाएंगे, रोड बनाएंगे तो आपको टाइम चाहिए, 15-20 साल लगेंगे उसके सारे जेस्टेशन पीरियड कवर होने में. सो टेक अ 20-year bond, issue a 30-year bond, and who will buy these bonds? The insurance companies. Who else can buy these bonds? The pension funds. Because again they are collecting money for a long period of time. So in that case it will be proper time as a liability gap covered. एक word होता है economics में, time liability gap. Time liability gap क्या है? If I am giving loan for 5 years, but I am taking deposits for 2 years, how will I pay back my depositor? अब सोचिए बैंक जो करते हैं, I am a bank, you are my depositor, say these set of people, they come to me, give me deposits up to 5 years. Now I am lending to these set of people, they are infrastructure developers and all, for 20 years. Now, how will I pay back the money of these people 5 years later? Because I have given their money for 20 years. Then what am I expecting? Some other set of people will come who will give me their money and I will use their money to give back to these people if they want, or if they don't renew their fixed deposit and all. And in the meantime, these guys will keep doing their work and keep giving me their interest and so on. पर इसी को तो हिंदी में इसकी टोपी उसका सर बोलते हैं ना. तो पॉन्जा ही चल रहा है फिर. अगर ये लोग नहीं आए यहाँ से तो इनके पैसे देने पे खतरा. So that is time liability gap. That should not happen. That is why ideally long-term project should be financed by long-term savings. And those long-term savings come from insurance, come from pension. तो pension के लिए आपको क्या करना चाहिए? Again incentivize कीजिए. जैसे एक अटल पेंशन योजना. तो उसमें क्या किया? गरीब लोगों को बोले that you pay 3,000 rupees per annum for say 30 years in your life, and then after 60 years of age, you will receive 3,000 per month. You understand that? So that kind of a scheme being launched. इसके दो फायदे हैं. एक आपको long term savings मिली, but more importantly, if I am poor, my real test is in my old age. Why? Why is my real test in my old age? Because as a poor person, my savings will be small because I never earned sufficiently. जब मैं कमा ही नहीं पाया sufficiently, तो save कैसे करूँगा? तो मेरे saving नहीं होने पे अब old age में मैं या तो अपने बच्चों पे निर्भर रहूँ, या किसी समाज के सिस्टम पे, कोई अनाथालय या कोई वृद्धाश्रम, इन पे निर्भर रहूं. That I either depend on old age houses or I depend on my children. But how do I remain independent if somebody can promise me a pension? You understand that? And that can be contributory pension so that it doesn't put the burden on the exchequer. Do I believe we are clear on that? So this is one basic idea to go by. All right. So you take down few things now. अब मैं आपको ये कुछ schemes बता रहा हूँ जो हम लोगों ने apply किया है इंडिया में. So we see on that, you write, government has taken several steps. Okay, I'm just answering a question. Sweta, I'm answering your question. Your IES classes start from 4th of March. From 4th of March, Monday, your IES sessions will begin. Okay. I mean classes specific for IES. मैं बस clarify कर दूं, ये classes भी IES में काम आएंगी. तो जब आप IES बोलते हो, कभी-कभी मन में बैठता है वही वाली class है जो IES है. नहीं, इन classes के plus जो classes हैं, जो specific for IES हैं, they begin from 4th of March.
for you. And जो लोग IES नहीं दे रहे हो वो ईश्वर के लिए उन क्लासेस में मत आना. ऐसे ही कुछ मन नहीं लग रहा, चलो चलते हैं, वो मत करना, उससे अच्छा कुछ कर सकते हो लाइफ में. All right, so you write that. You wrote government has several steps to promote financial inclusion. To promote financial inclusion, full stop, they are, then you write 1, Jan Dhan Yojana. Jan Dhan Yojana. I'll keep calling it JDY. All right, Jan Dhan Yojana. So you write, put a dash. It was initiated in 2015. Now when I say 2015, I'm sure all of us understand that's financial year 2014-15. So it was initiated in 2015, full stop, under JDY, government provides banking inclusion by giving facility to all individuals to set up zero balance account with Aadhaar enabled identity verification. Aadhaar enabled identity verification. Full stop. I can believe everybody understands zero balance account. There is no minimum balance requirement. So they are free to keep account at zero balance. You write in the same thing, the government also allows overdraft facility to those individuals whose account maintains a minimum balance for up to 6 months. Full stop. They are allowed to overdraw. Up to 5,000 rupees at one time. Up to 5,000 rupees at one time. I'll tell you what I imply by that, what is the point we are making here. That when we talk about overdrawing facility, overdraft is I can deposit 100 rupees, but I can withdraw more than 100 rupees. Then I am overdrawing. So government says that you put your money in the bank account. If you maintain your account continuously for 6 months, then you will be eligible to withdraw up to 5,000 rupees from your account as an overdraft facility. There are interests charged on this. This is not free loan. There is an interest charged on this. In the same thing you write,
The scheme also promises the scheme also promises free life insurance. The scheme also promises free life insurance to the account holder. In the same thing you write, government has also appointed banking correspondents, इनको बैंक मित्र बोलते हैं हिंदी में. All right, so there are people who will guide the account holder how to use the money, how to spend it, where to invest it, that kind of a thing. So banking correspondents to implement ease of banking through JAM Trinity. JAM Trinity is Jandhan Aadhaar Mobile. All right, that is JAM Trinity. Jandhan Aadhaar Mobile. So open a Jandhan Yojana account. You have an Aadhaar identification connected to your mobile phone, and now you can be in your village and you can operate your account using the JAM Trinity. All right, that your verification is through Aadhaar, your mobile phone is identified, and your Jandhan Yojana account is functional. You make payment, you accept deposits, credit card and all, everything can be done through that JAM Trinity. All right, then you change the paragraph, you write second, B. Government has developed several schemes to promote credit inclusion, that is accessibility to cheaper loan, by formal agencies. Full stop. Government has implemented schemes like priority sector lending, interest subvention schemes. I can believe we all understand these. We have discussed priority sector, we have discussed interest subvention. So interest subvention schemes, Kisan credit card, in which farmers are allowed to borrow up to rupees 2 crore, 2 lakh, up to rupees 2 lakh. किसान आंदोलन बंद हो जाएगा अगर सरकार ने ये अलाउ कर दिया, सारे किसान घर चले जाएंगे, हो गया, अब और कुछ नहीं चाहिए आपसे. All right, up to rupees 2 lakh without any collateral, to buy their inputs,
mainly seeds, fertilizers and pesticides. What I'm trying to drive home to you is that these Kisan credit cards are not viable everywhere. They won't be applied everywhere. But the farmer's name is registered, they are offered a card, the bank is registered, and now they can use this credit card to buy their input. So this will work mainly in their input market. अगर seed खरीदने गए हैं, fertilizer खरीदने गए हैं या pesticide खरीदने गए हैं, the card will get them the purchase, all right, up to the value. Now every farmer doesn't get qualified for 2 lakh rupees, it is up to 2 lakh, so it can be anything below that also. In the same thing you write, change the paragraph, this is same point, still in credit inclusion, you write, government has also promoted credit through micro unit development and refinancing agency. Micro unit development and refinancing agency. In a bracket you write Mudra Yojana. Mudra का full form है ये, Micro Unit Development and Refinancing Agency, that is Mudra. All right, so Mudra Yojana. Close the bracket and write, under this scheme, अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया, just from your prelims point of view, keep it in mind, that now the Ministry of Finance reports that we have 54 crore Jandhan accounts, 54.8 crore actually, Jandhan accounts in India with 35% beneficiaries being women. All right, 54.8 crore Jandhan accounts in India with 35% beneficiaries being women. All right, एक और information वो देते हैं that the total money mobilized in Jandhan accounts is now more than 2 lakh crore. All right, total money mobilized in Jandhan account is now more than 2 lakh crore. क्योंकि जब जनधन अकाउंट सेटअप हुआ था, जब ये स्कीम बनी थी, तो एक क्रिटिसिज्म बहुत लोग करते थे कि इसमें पैसे ही नहीं आएंगे, और जब पैसे नहीं आएंगे तो अकाउंट किस बात का होगा. But remember, if 54 crore accounts are there and 2 lakh crore rupees are there, then the average is approximately 4,000 rupees per account, which is a very healthy average considering that it is mainly catering to very poor people in the system. All right, so that is an information you should keep in mind. Okay, coming back to Mudra Yojana, you write, under this scheme, government guarantees the loan through Mudra and loans are given by financial institutions to very small production units with investment below rupees 1 crore and turnover below rupees 10 crore. All right, investment इन्हीं को micro units कहते हैं इंडिया में. Investments below 1 crore, turnover below 10 crore, they qualify as micro units in the country. In the same thing, you write, the loans are given in 3 categories.
first, loans up to rupees 50,000. Loans up to rupees 50,000. And in a bracket you write Shishu loans. Naam hai iska. Alright. SHISHU. Shishu loans. Then you write B. Loans between 50,000 to 5 lakhs. Loans between 50,000 to 5 lakhs. In a bracket you write Kishore loans. अभी शिशु थोड़ा बड़ा हो गया, adolescent हो गया है. So Kishore loans. And then you write C, 5 lakh to 10 lakhs. 5 lakh to 10 lakhs. Tarun loans. TARUN. Tarun loans. Alright, so Shishu loan, Kishore loan and Tarun loan, 3 types of loans given in it. In the same thing you write, according to the interim budget, which came this year. आप हंस रहे हैं, मुझे एक स्टूडेंट ने टेलीग्राम पे पूछा है ये, which interim budget sir? मैंने उनसे पूछा भी कि तुम मेरे स्टूडेंट हो या कहीं और पढ़ते हो, बोला आप ही का स्टूडेंट हूँ. चलो तब साथ ही दम कूदते हैं. मैंने उनको बोला भी चलो 3rd फ्लोर से साथ में कूदेंगे, फिर मैं तुम्हारे ऊपर कूद जाऊंगा. बट एनीवेज, तो इंटरिम बजट जब भी मैं बोलूं तो 2019 की बात नहीं कर रहा, 2024 की ही बात कर रहा हूं. ऑलरेडी ये हमेशा ध्यान रखो. मुझे लगा कि शायद यही कंफ्यूजन उनको हुआ होगा, मे बी इंटरिम बजट ऑफ 19 और 24. सो मे बी दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट ऑलवेज 24. सो इन द इंटरिम बजट, that, sorry, according to interim budget, there are 42.1 crore beneficiaries. 42.1 crore beneficiaries, and total loan disbursal total loan disbursal is 21 lakh crore. 21 lakh crore. Now, you know, that also shows that the average loan disbursed is 50,000 rupees approximately, like 42 crore beneficiaries and 21 lakh crore. So average loan disbursal is 50,000 rupees, which means a lot of loan going towards the Shishu or the Kishore kind of units. All right, that is what it also shows. Now, एक बात समझना इसमें, क्योंकि अगेन कुछ लोग जो थोड़ा डिस्टर्ब्ड होते हैं इन बातों से, वो आपको लिखेंगे आर्टिकल्स इस पर. देखो, इसके 2 साइड्स हैं. देयर आर 2 facets to what we are discussing here. A, we are giving these very small loans to people for 10,000, 20,000 kind of. What will they do out of it? So somebody will set up a cycle repairing shop, somebody will set up a small mechanics shop, somebody will set up maybe a small trading shop. ऐसे छोटे छोटे दुकानें खुलेंगी. तो कुछ लोग कहते हैं कैसा नौकरी दे रहे हैं भारत में लोगों को, इससे क्या ही भला होगा इनका. तो इसको कंपेयर करना चाहिए कि कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा इनका. हमेशा ये सोचिए that if I actually want to empower my people, then that empowerment will come when I am educating them well, skilling them well, because only then they will be empowered to do bigger jobs, bigger things. But if by chance there are people unskilled, people not trained, how do you make sure that at least they have a livelihood? So you make sure that they have a livelihood by making sure that they get some small loans with which they can start a small business, and informally maybe over a period they will employ another person with them. So that can create some extra employment, but more importantly, at least it employs the person involved and gives them something productive to work with. Under Mudra loans, there is also a structure. Under Mudra loans, the structure is that the person receiving Mudra loan will also receive training from the agency from which it receives loan regarding how to use that loan and improve their situation. You understand that? So again, that is something good. That it's not only a loan, it's also where training will be given, at least to the people receiving it, to know how to use it to earn better returns. So this is again something that we can or we have to keep in mind. तो
एक पहलू ये है दैट अगर कोई कहते हैं क्या फ़ायदा ये लोन देकर, तो बात अगर नहीं देंगे तब तो ये और बेरोजगार रहेंगे, फिर क्या फ़ायदा होगा। दूसरा साइड क्या है, दूसरा साइड है कि कुछ चीज़ें हैं जो भारत के इनएफिशिएंसी को दिखाती हैं, जो हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि इनका सनसेट क्लॉज आए। देयर आर फ्यू थिंग्स विच शो इनएफिशिएंसी ऑफ इंडिया एंड देयर शुड बी अ सनसेट क्लॉज टू इट। फॉर एग्जाम्पल मुद्रा लोन, फॉर एग्जाम्पल मनरेगा, फॉर एग्जाम्पल जनधन योजना। ये तब तक है ना जब तक गरीब हैं लोग बहुत ज़्यादा देश में। तो जिस दिन हम देश से प्रॉपरली गरीबी खत्म कर देंगे, इन स्कीम्स की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। You don't know these schemes, don't need these schemes if you don't have very poor people. So if we can actually remove poverty and get rid of poor people in the system and make them uplifted, these schemes will have a sunset day. So the real target is that reach a time, reach a day when you are actually not needing these kind of schemes. क्योंकि मनरेगा एक तरह का acceptance क्या है? I can't give you good quality job, stay with a मनरेगा. अभी कुछ लोग बोलते हैं अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी भी होना चाहिए, बट अगेन वो एक टैसिट एक्सेप्टेंस क्या है, वी कांट गिव गुड जॉब्स टू आवर अर्बन पीपल आल्सो, सो कीप एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये नतीजा ही इस चीज़ के हैं कि हम हमारे लोग पॉवर्टी में हैं। इसमें एक और बात समझिए, वी स्टार्टेड द पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स फ्रॉम 1978-79, दिस इज 2024, देयर शुड बी अ प्रॉपर असेसमेंट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स वी हैव रन, why did they go bad, where did things go wrong, so that we can have real answers in front of us. That is the aspect. सरकार से कहाँ चूक हुई, किन चीज़ों में पैसे चले गए, ये बोल के भी काम नहीं चलेगा कि करप्शन में चले जाते हैं। Where is that corruption, who are the people doing it, hold them accountable, or is it not even corruption but wastage due to which you lose your money in poverty alleviation. Sometimes people don't know what to do with that money and they waste it to meet their targets set by their departments. You understand that? So that again becomes a challenge in poverty alleviation. कि भाई सही बंदा मिला नहीं पैसे देने को, किसी को पकड़ के दे दिए, भाई टारगेट पूरा होना चाहिए, दिखना चाहिए कागज़ पे कि मैंने लोन दिया या मैंने सपोर्ट किया पॉवर्टी एलिविएशन के लिए। एक और गलती करते हैं हम लोग, हम टारगेट ओरिएंटेड पॉवर्टी देखते हैं। तो आप सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज द पॉवर्टी लाइन ऑफ अ कंट्री इज 500 रुपीज़ पर मंथ. Suppose there are 50 people in this country at 400 rupees per month, and there are 50 people in this country at 200 rupees per month. And now you get 5,000 rupees per month to alleviate poverty. You understand that? Or say 2,000 rupees per month to alleviate poverty, or 20,000 to alleviate poverty, any money. पता है आपके दिमाग में क्या आएगा? 400 लोग, 400 रुपए कमाने वाले जो लोग हैं, ये 50 लोग हैं, अगर इन सबको 100 रुपए दे दिए जाए तो ये सब पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे। तो ये टारगेट ओरिएंटेड पॉवर्टी इरेडिकेशन होता है। दैट 5,000 रुपीज़ आपको मिला, कायदे से वो 5,000 पहले किसको मिलना चाहिए? जिसके पास 200 रुपीज़ है। So that person should get the 5,000 first. But that 5,000 is otherwise given to those who have a 400 rupees thing, and that means that you are eradicating poverty, but you are not removing the severity of poverty. Your very severe poors are still poor. On paper, the number of poors looks lesser, no doubt. So that target-oriented approach has that kind of a challenge, that you have to not only eradicate poverty, you have to eradicate severity of poverty by reducing the income gap between people who are below poverty line and the poverty line. You know, मान लीजिए poverty line है 500 और 200 पे लोग हैं, ये gap को कम करना बहुत ज़रूरी है, so that you can make some people capable to grow. So that is the key to keep in mind, that these are the dangers of target oriented approach. Okay, now with after Mudra Yojana, you change your paragraph again and write another credit scheme, another credit scheme brought by the government, another credit scheme brought by the government is PM Swanidhi, SVANIDHI, PM Swanidhi, SVANIDHI. In a bracket you write Street Vendors Nidhi Program. Street Vendors Nidhi Program.
and you write in that, put a dash and write, it was launched under, it was launched under Atmanirbhar Bharat Yojana, Atmanirbhar Bharat Yojana, full stop. Under this scheme, under this scheme, government provides loans to street vendors to street vendors registered with municipal corporation, comma, resident welfare association, comma, other corporation bodies, and any local institution which identifies them under regular street vending operations. Full stop. I can believe all of us understand street vendors, जो सड़क पे ठेले लगाते हैं या दुकान लगाते हैं, उससे उनका काम चलता है. In the same thing you write, the first installment of loan is rupees 10,000, and if it is paid back, then they are eligible to receive the second installment of rupees 20,000, and on repayment of second installment, they are eligible to receive third installment of 50,000. Third installment of rupees 50,000. The scheme also covers training of individuals to use the loans for productive purposes in order to pay them back
on time. There is also a provision of regular follow-up to assure that the borrower remains solvent. Borrower remains solvent. I can believe you understand that borrower is in a position to pay back, keeps working. So that is also inbuilt into the mechanism. You write in the same thing, according to the interim budget speech, 78 lakh beneficiaries have been given these loans with 2.4 lakh beneficiaries receiving its third installment. All right. Then you write below that, C now. You write, government has promoted insurance inclusion. Okay, I'm just answering a question. Business facilitator are people who will help you in making sure that you are coordinated for your sale and purchase. Business correspondents are people who are individuals here. So facilitators can be institutions also. Yes, it means paying by toll. It creates more populism, Bhumika. That is why these kind of schemes are implemented. No, it is up to 1 crore investment, Divyanshi. So even people investing 1 lakh rupee are below 1 crore. Up to 1 crore. All right. No, it won't for farmers' personal use, Shiv Prasad. Okay. You write this up then. You write, government has, that is fine. After that, you wrote insurance program? Insurance inclusion? Okay, so then you write in that insurance inclusion through several schemes to provide insurance with lesser premium For example, PM Jeevan Jyoti Bima Yojana, PM everywhere is Pradhan Mantri or Prime Minister. All right, just keep that in mind. And don't ask me why do we have that in front of everything. All right, so PM Jeevan Jyoti Bima Yojana. हाँ नहीं उसका कारण दिया था सरकार ने उन्होंने कहा कि हम किसी के नाम पे नहीं लाना चाहते वो नेम सेंटर्ड पॉलिसी बनाता है पोस्ट सेंटर्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि जो पोस्ट पे हैं उनकी चीज़ होगी तो एक सिस्टम है कि जो भी प्रधानमंत्री हैं उनके नाम से इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन इट्स द पोस्ट टू विच वी आर अटैचिंग दैट वाज अ रिटन एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट एक्चुअली पीपल हैड आस्क्ड देम दैट व्हाई देयर इज अ पीएम ऑन एवरीथिंग दैट आंसर्ड दिस ऑल राइट सो यू पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना in a bracket you write life insurance
comma, PM Suraksha Bima Yojana, PM Suraksha, SURAKSHA, Suraksha Bima Yojana. In a bracket you write accident insurance, comma, PM Jan Arogya Bima Yojana, Jan Arogya Bima Yojana. In a bracket you write health insurance. So again, Jan Arogya Bima Yojana, there is no premium needed from the beneficiary. All right, the government says that the bottom 20% of population, that's around 12 crore households, around 55 crore people, all right, will qualify for this scheme. And under this, they don't have to pay anything, but they will be eligible to receive up to rupees 5 lakh worth of treatment from any impaneled hospital, free of cost for all members of the family. So suppose there are 2 members of the family who fall ill and their treatment can be done within 5 lakh rupees, then both of them will be given that treatment of within 5 lakh rupees. So that is the Jan Arogya Bima Yojana. All right, so Jan Arogya Yojana is health insurance up to rupees 5 lakh in any of the impaneled hospitals that people can receive. 33,000 hospitals are now impaneled in it, out of which around 20,000 are government hospitals and 13,000 are private hospitals. But they're all impaneled in this, the Jan Arogya Yojana. Also, government has said that more than 50 crore people have benefited now, cumulative number of course, so more than 50 crore people have benefited in this scheme. The average expenditure of the scheme has been found to be around 10 to 12,000 rupees per capita. It is that people are mainly using it for dialysis. I'm just giving you some insights from the scheme. So people are mainly using it for dialysis, and the average expenditure has been around 10-12,000 rupees. As in, the point I'm making is, many people had said this will become corrupt and people will take out a lot of money and there will be nothing to support. But this is something that has been proven wrong. अब कुछ बात हमेशा समझिएगा, मैं आगे आपको और भी पढ़ाऊंगा. जो हमारे लेफ्ट विंग हैं वो हर जगह सरकार को चाहते हैं, और मैं लेफ्ट विंग की बात बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि आप जो अखबार पढ़ते हैं वो लेफ्ट विंग है, तो उसमें हमेशा ऐसी बातें लिखी मिलेंगी, ये सरकार तो गरीब के लिए कुछ नहीं कर रही, मेडिकल के ऊपर तो खर्चा हो ही नहीं रहा. पर आप समझिए, मेडिकल का खर्चा सिर्फ हेल्थ एक्सपेंडिचर नहीं है, मेडिकल का खर्चा जल जीवन मिशन भी है. क्यों जल जीवन मिशन मेडिकल का खर्चा है? वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है. If you give clean tap water to everyone, you don't let them go unwell. So that is why it is a medical expenditure or a health expenditure. मेडिकल का खर्चा स्वच्छ भारत योजना भी है, क्योंकि आप सैनिटेशन करेक्ट कर रहे हैं, ड्रेनेज ठीक कर रहे हैं, तो हाइजीन ठीक रहेगी तो लोग बीमार कम पड़ेंगे. मेडिकल का खर्चा बचाने का तरीका जन आरोग्य योजना भी है, कि अगर आप जन आरोग्य योजना दे रहे हैं तो 5 लाख रुपए तक का आपका जो इलाज है वो हो जाएगा. अब कुछ लोग कहते हैं सरकार को और खर्चा बढ़ाना चाहिए. मैं भी कहता हूं सरकार को और खर्चा बढ़ाना चाहिए. मेडिकल जो स्ट्रीम है, लाइक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इज नॉट इवन 1% टुडे, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, इज नॉट इवन 1% ऑफ द GDP. दैट इज वेयर वी आर टुडे. अगर हम हेल्थ केयर को आप सोच के देखिए, इस बार के बजट में हेल्थ केयर पे क्या एक्सपेंडिचर है? अराउंड 89,000 करोड़, while our GDP is touching almost 350 लाख करोड़. तो अगर हम देखें कि गवर्नमेंट का क्या खर्चा कर रहे हैं हेल्थ केयर पे, तो वो तो 3.5 लाख करोड़ भी नहीं है. ठीक है, मान लिया मैंने ये बात, लेकिन गवर्नमेंट जो खर्चा कर भी रहे हैं उसके बाद भी लोग सरकारी अस्पताल क्यों नहीं जा रहे, ये भी तो चर्चा होनी चाहिए. That why people are not going to government hospital, why people are not going to government schools, given a chance why are they rejecting them? जबकि वहीं पे जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छा करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग, कुछ लोग कहते हैं नहीं अमेरिका से बुद्धि लेकर आने वाले लोग पैराडॉक्सिकल, बट एनीवेज, तो जो अमेरिका से बुद्धि लेकर आते हैं वो बोलते हैं नो, प्राइवेट सेक्टर विल अट्रैक्ट individuals and therefore they will be so enamored by private sector that they will reject the government. That's true in America. In US, in Europe, the private sector is very flashy and they try attracting you with all sorts of things to their hospital, their diagnostic centers. But in India,
people are choosing private sector because of the apathy or the problem they get in government. Otherwise, there wouldn't be so much of crowd in All India Institute of Medical Sciences. अगर लोग प्राइवेट के पीछे ही भाग रहे होते इंडिया में तो एम्स में इतनी भीड़ नहीं होती। और मैं सिर्फ दिल्ली के एम्स की बात नहीं कर रहा, जहां भी आप जाएंगे एम्स है, वहां भीड़ लगी हुई है बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब हम इस बात से अट्रैक्ट नहीं हो रहे कि प्राइवेट सेक्टर हमें अट्रैक्ट कर रहा है। हमें सरकार धक्का मार रही है कि भागो प्राइवेट की तरफ, हम तो अच्छा काम करके नहीं देंगे तुम्हें। अंडरस्टैंड दैट, दैट इज द चैलेंज, प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी फेस अराउंड। सो वी हैव टू मेक दिस ऑल्सो दैट तुम खर्चा बढ़ाओगे, बट अगर एक लीकिंग बकेट में और पानी डालोगे तो वो पानी तो और बाहर निकल जाएगा। सो यू कांट पुट मोर वाटर इन अ लीकिंग बकेट, सो सील द बकेट एंड देन पुट द वाटर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। They are already paid better than the private sector. सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनको प्राइवेट से बेहतर पैसे मिल रहे हैं। तुम किसी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में जाओ, टियर 2, अब अगर कंपैरिजन अपोलो और से मैक्स से नहीं करना है, कंपैरिजन उनसे करना है जैसी सुविधा आप भी दे रहे हैं। तो एक टियर 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर्स की हालत खराब रहती है, 12-12 घंटे की ड्यूटी है और पैसे भी नहीं है बहुत ज़्यादा तरीके से। उनके मुकाबले सरकारी डॉक्टर्स को बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन तुम अपने गांव में देखो, रिपोर्ट ही नहीं करते गांव के अस्पताल में आकर, आएंगे ही नहीं। अगर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है तो आके चले जाएंगे, अगर बायोमेट्रिक नहीं है तब तो एक दिन आएंगे, 6 दिन का सिग्नेचर करेंगे। तो ये अपैथी है कि नहीं मैं नहीं काम करूंगा, सरकारी नौकरी मिल गई अब नहीं करूंगा काम। जो लोगों के लिए दवाई आती है वो ब्लैक मार्केट में बेच दी जाती है, फिर दवाई की कमी हो जाती है, एक्सपायरी डेट की दवाइयां पड़ी हुई हैं, कोई देखने वाली नहीं है कि भाई ये स्टॉक क्लियर करो। तो ये अपैथी है। इसमें ऐसा नहीं है कि पैसे ज्यादा देने पर बेहतर काम करके दिखा देंगे। यहां पे मामला उल्टा है, काम नहीं करने के मूड में ही ज्वाइन किया है। ये समझिए आप। तो ये ठीक करना जरूरी है, इसीलिए दैट पुट अ check and balance, that you perform well, otherwise you perish. ये बहुत जरूरी है। कैरेट के साथ स्टिक होना बहुत जरूरी होता है। हमारे यहाँ स्टिक मिसिंग है इंडिया में, कैरेट एंड कैरेट है। You don't work, nobody penalizes you. On your watch people die, nobody penalizes you. प्राइवेट हॉस्पिटल में तो डॉक्टर को पीट भी देते हैं। तो आप समझिए ये बात कि ये, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि लोग डॉक्टर को पीट देते हैं। That is again something that nobody can condone. Doctors are trying their best, but then again the pressure is so much. तो ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी अस्पताल में सब लोग खराब काम कर रहे हैं, मेरी बात को कभी भी एक्सट्रीम में मत सुनना। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ ऑन एन एवरेज क्या देखा जाता है। ऑन एन एवरेज क्या आप जाएंगे सरकारी अस्पताल, क्या आप जाएंगे सरकारी स्कूल, अपने बच्चे को भेजेंगे एक नॉर्मल सरकारी स्कूल? और अगर आप ये नहीं करेंगे तो सवाल उठता है क्यों नहीं करेंगे अगर सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है उन पे। तो if government has that kind of a budget, then why people are shunning these schools, shunning these hospitals? That is the question I'm putting up, which we have to find an answer to. It may not necessarily be because of absenteeism, it may not necessarily be because of inefficiency, it can be because of the apathy you get sometimes in these places, lack of training of the individuals in these places. तो जब हम बोले ना सरकार ज्यादा होना चाहिए, सरकार ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सरकार एफिशिएंटली ज्यादा होने चाहिए ना। There should be more government. I mean, India has one of the lowest, I repeat, one of the lowest public servant to population ratio. You know, our public servant to population ratio is not even touching 130. Oh, sorry, 13. अमेरिका वगैरह में ये रेशियो 200 के ऊपर है, जबकि वो सपोजिटली कैपिटलिस्ट कंट्री है। बट हमारी प्रॉब्लम है कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं वही अगर जैसा काम करके दिखा रहे हैं तो उसमें हिम्मत नहीं होती कि और लाए जाएं, क्योंकि और लाए जाएंगे तो लगता है कि और पैसा वेस्ट होगा। देखिए हमेशा एक बात समझिए, दो विचारधाराओं की बस लड़ाई होती है और दोनों ही एक्सट्रीम में गलत हैं। there is a fight between two ideologies and both the ideologies are incorrect in their extremes. So one ideology says bring more government, everything should be done by government, food distribution by government, schooling by government, petrol pumps by government, banks by government, factories by government. That's the socialist ideology. Another ideology says
don't bring government. Things should be done by market. So school, banks, hospitals, everything should be done by market. Government can at best do market interventions, like say give a voucher to people, or give tax benefits, or give them subsidy, and that ways you solve the issue. Both not correct. You need a right mix of market and government, regulation and performance. So once you create that mix, and that mix depends from one country to another, but once you create that mix, that is the key to the real success. बिना सरकार के भी काम नहीं चल सकता बिल्कुल भी, लेकिन सिर्फ सरकार ही रहेंगे तो मामला गड़बड़ होता है. So always keep that as role of state and role of market debate that I did with you earlier. Keep it like that in the mind, that role of state, role of market has to be understood. But many people who are there, like जो सोशलिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनसे ये बात उनके मन से हटती ही नहीं कि सरकार सब कुछ नहीं कर पाएंगे, और करप्शन अपना रोल प्ले करता है, अपैथी एट वर्क अपना रोल प्ले करती है, लेजीनेस अपना रोल प्ले करता है. अगर आप बोल देंगे तुम्हारी नौकरी परमानेंट है, वो लेजी भी हो सकते हैं. ये भी तो नज़रिया होना चाहिए देखने का. ऑन द अदर हैंड, द पीपल हु आर neoliberals, market oriented, उन्हें दूसरा आइडिया नहीं दिखता, that market cannot distribute properly to those who are downtrodden, market cannot give jobs to everyone unless they are not trained in advance, and that training who will give? The government. Market cannot give health care to everyone, so who will look after health care? The government. You understand that? So you need a right mix, again I repeat, of market and government, which you will never be able to see if you are ideologically blind. जब लोग आइडियोलॉजी से ब्लाइंड होते हैं, उनको सवाल ही नहीं दिखेगा ये, क्योंकि वो अपने आइडियोलॉजी से मैरिड हैं. उनको लग रहा है मैं और मेरी आइडियोलॉजी, अक्सर ये बातें करते हैं. तो फिर वो बढ़ नहीं पाते आगे. So this is the challenge that you would have of developing things. अब इंडिया में एक और चैलेंज है. From 51 to 91, we lived with an ideology. We trained people in that ideology. We continuously put people in that mindset. So now people are developed with that. कुछ बातें हमारी बिलीफ बनती हैं क्योंकि बचपन से हमें किसी ने सिखाया, और उन्होंने सिखाया क्योंकि उनको किसी ने सिखाया. तो पब्लिक सेक्टर इज फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये हमारे मन में बैठी हुई बात है. अब बाई चांस किसी ने कह दिया नो दिस पब्लिक सेक्टर इज नॉट फंक्शनल, लेट्स सेल इट ऑफ, हमें लगता है हमारा कुछ जा रहा है. फैमिली सिल्वर, ये टर्म यूज करते देखेंगे आप लोगों को. इट्स फैमिली सिल्वर, वी आर सेलिंग. फैमिली, विच फैमिली, हुज फैमिली, एंड व्हाट काइंड ऑफ सिल्वर, विच इज ब्लीडिंग यू मनी एवरी ईयर. देन व्हाट काइंड ऑफ सिल्वर इज दैट? बट दैट्स आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट बिकॉज ऑफ बीइंग ट्रेन्ड. तो हमें बचपन से ट्रेन किया गया ऐसा. अब देखेंगे हमेशा लोग बोलते हैं सरकार को ले आओ फिर यह मामला ठीक हो जाएगा, जबकि हमें फर्स्ट हैंड नजर आता है सरकार का करप्शन. जो ट्रैफिक पुलिस आपसे रोक के पैसा लेते हैं, सरकार है. जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हो अपने मकान का, पैसा खाते हैं, सरकार है. अपना लाइसेंस बनवाने जाते हो, वहां पे जो पैसा मांगते हैं, सरकार है. तो सरकार तो हर जगह पैसा मांग रहे हैं कि मेरा पैसा दे दो मुझको और पैसा, तो वो सरकार ही तो है. पर हम क्या बोलते हैं, सरकार अगर होगी तो चोरी नहीं होगी, कोई प्राइवेट इंसेंटिव से, प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करेगा. ये हमें सिखा पढ़ा दिया गया है. साथ में हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, सस्ता तो होना ही चाहिए, लोगों के लिए, मदद के लिए. सस्ता नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? सस्ता होना चाहिए लेकिन वायबल होना पड़ेगा ना. इफ इट इज सो चीप, आप सोच के देखिए, हमने रेलवे के टिकट्स के फेयर 1996 से लेकर 2012 तक बढ़ाए ही नहीं. ये कैसा सस्ता हुआ? आप सोचिए, कल मैं आपको एनएफएसए पढ़ा रहा था. एनएफएसए पे जो हमने रिग्रेसिव एलिमेंट किया अभी, फ्रॉम मनी चार्ज टू जीरो, ये कैसा सस्ता हुआ? इससे नतीजा क्या होगा? अब सोचो जब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, when we will not have, और नहीं भी आए क्राइसिस, when we don't provide good water supply to our poors, slum dominance in the metropolitan, then what is the benefit that poors are getting? So the challenge is we are not thinking poor oriented, we are thinking again target oriented, showing it on paper. पेपर पे दिख जाना चाहिए कि हाँ मैंने गरीब का कुछ भला कर दिया. उसी को देख के जो अमीर हैं वो नाच लेंगे, जो आइडियोलॉजी से ग्रसित हैं वो नाच लेंगे. पॉइंट वो है, वो वहां पे, that unless we don't improve upon it, the challenge will continue. अब ये बहुत अच्छा एक बात और सोचिए. अभी मैं 2 दिन पहले एक जगह पे जयती से भी मिला, तो इन्हीं सब बात को लेकर चर्चा हो रही थी. खैर बाद में अगेन वी अग्रीड टू डिसअग्री एज ऑलवेज.
तो अब यही बात उनको वो बोले कि अब देखिए रियल वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं। मैंने कहा रियल वेजेस कैसे बढ़ेंगे? रियल वेजेस बढ़ेंगे अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। अगर आप वर्कर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तो विच फर्म विल बी विलिंग टू पे हायर वेज टू द वर्कर? तो रियल वेज नहीं बढ़ेंगे। लेबर सप्लाई बढ़ रही है, लेबर प्रोडक्टिव है नहीं। अब मान लीजिए ड्राइवर रखा मैंने आज से 5 साल पहले, उस वक्त कम लोग ड्राइवर बनने को तैयार थे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कम लोग ड्राइवर बनने को तैयार थे। आई गिव दिस पर्सन 25,000 रुपीज पर मंथ। 5 years पास, एवरी डे आई कीप रिसीविंग पीपल, सर मुझे ड्राइवर रखेंगे, सर मुझे ड्राइवर रखेंगे। मैं क्यों इनकी सैलरी बढ़ाऊंगा रियल टर्म्स में? मेरे पास तो एक्सोडस लगा हुआ है, सर प्लीज काम देंगे, सर प्लीज काम देंगे। व्हाई विल आई इंक्रीज द सैलरी? इन रियल टर्म्स, नॉमिनल टर्म्स आई माइट इंक्रीज, giving them some increment etc, but why will I increase it in real terms? I have excess labor supply on the lower end of the circle। क्योंकि आप फैक्ट्री नहीं लगाए, आप फैक्ट्री नहीं लगाए क्योंकि लेबर लॉ रिफॉर्म नहीं किए, लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म नहीं किए, तो फैक्ट्री नहीं लगी। तो जब फैक्ट्री नहीं लगेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, तो जो ड्राइवर बनेंगे, कुक बनेंगे, उनकी पीएन बनेंगे, उनकी मल्टीप्लिसिटी होगी। तो एक एम्प्लॉयर क्यों बढ़ाएंगे सैलरी? नंबर 1। नंबर 2, एक एम्प्लॉयर सैलरी बढ़ाएंगे कैसे? आप अब मुझे जयती ने यही कहा that okay then you guys mean that everything should go to profit, but that is where the real thing comes in, no? That is profitability rising in India, and how much money are we paying as bribes to the government officers to run a business? So if you make the business person pay a bribe, अब बड़ा बिजनेसमैन तो चलिए उसको अपने कॉस्ट में ऐड करके अपना खर्चा चला के वेजेस भी पे कर देंगे, लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन है, आप में से कुछ लोग आते होंगे ऐसे फैमिलीज से जहां मीडियम स्केल बिजनेस होता होगा, स्मॉल स्केल बिजनेस होता होगा, आप देखेंगे आपके पेरेंट्स का एक परपेचुअल कंप्लेन होता होगा ब्राइबरी का, पैसा मांगने आ जाते हैं लोग। तो वो भी तो मेरे प्रॉफिट में से ही कट हो रहा है। तो सरकार घूस खाना कम कर दें, अपने आप वेजेस भी बढ़ने लगेंगी साथ में। बट हर मिनट पे यू ड्रॉप द हैट एंड दे आस्क फॉर अ ब्राइब। दैट इज द सिचुएशन वी आर इन एट द मोमेंट। कि गलती से कुछ हो गया तो ये तो वही हो गया। ठीक है, आप यूथ हैं, आपके लिए मोस्ट इजी एग्जांपल बता देता हूं। आप बाइक से निकल जाइए और देखिए जब चेक नाका पे आपको कोई रोक लेते हैं, 50 रुपया लेके ही सही, 20 रुपया लेके ही सही, कुछ ना कुछ लेके ही छोड़ेंगे आपको। मोगाम्बो का भतीजा हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा। तो अगर सरकार एक्सटॉर्शन पे काम करेगी, इफ द गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर एक्सटॉर्शन, कि हाँ आप बिजनेस कर रहे हैं तो मेरा हिस्सा ये रहा। इतने बेशरम है कि ठेले वाले से पैसा लेते हैं, और ऐसा तो है नहीं सुपीरियर्स को नहीं पता है, क्यों नहीं रोकते उनको? तो अगर मैं एक ठेले वाला हूं और मुझे ट्रैफिक पुलिस को 20 रुपया देना है या 50 रुपया देना है, तो मैं तो अपने प्राइस में ऐड करके आप ही को बेचूंगा ना। ये एक बहुत ओल्ड जोक हमने सुना था, दैट वो टैक्स अथॉरिटीज पे था। टैक्स की रेड पड़ी एक आदमी के यहाँ, तो उन्होंने बोला दैट ओके ऑल दिस लुक्स ओके, द फाइन वी हैव इम्पोज्ड इज व्हाट वी हैव इम्पोज्ड, बट वन थिंग यू कैन नॉट एक्सप्लेन एट ऑल, अबाउट 20 लाख रुपीज एज फीड टू द डॉग। कि आप 20 लाख रुपए आपने डॉग को कैसे खिला दिया, ये तो बिल्कुल गलत है, आपको इस बात पे फाइन देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला सर देखिए कुछ ले दे के मामला बना दीजिए, इस पे क्या फाइन दूं मैं, 20 लाख रुपीज फेड टू द डॉग ही है। नो दिस वी कैन नॉट एक्सेप्ट। तो फिर बात हुई, उन्होंने कहा चलिए फाइन तो आप पे 10 लाख का बनता है, मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, मैं मामला रफा दफा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, 1 लाख रुपए अपने मुंशी जी को बुलाया, बोला मुंशी जी 1 लाख रुपए इनको दीजिए और लिखिए 21 लाख फेड टू द डॉग। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम पार्ट है, you know, and this is a joke I had heard around 15 odd years back. Somebody was saying this and I had a hearty laugh, no doubt, you know. तो ये बात आपको समझा रहा हूं that अगर कोई आपको पैसा खिलाने को बोलेंगे, कहां से आप फिर पे बैक कर पाएंगे और कैसे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी? सो करप्शन इज अ बिग एस्पेक्ट, lack of efficiency is a big aspect, training etc, and lack of growth in business is a big aspect. तो जब भी employment की बात होगी, मैं आपको उसी तरफ ले जा रहा हूँ कि gradually हम उधर मूव कर रहे हैं। जब भी employment की बात हो, हमेशा दिमाग में रखिए that if somebody says real wages are not rising, well real wages cannot rise unless the inefficiencies in the system are not taken care of, especially in the last 4-5 years when inflation has been high and unemployment has been high. सप्लाई साइड इन्फ्लेशन का वही झटका होता है ना, that inflation gets high, unemployment gets high. So if inflation is high, unemployment is high, how do you expect workers to get real wages? You know, that is to be high. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है।
ये जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम मिस्टेक्स करते रहेंगे। और फिर मैं कहूँगा आइडियोलॉजिकल ब्लिंकर लगा के जो लोग देखेंगे लाइफ को वो ये मिस्टेक तो लगातार करेंगे। दैट आइडियोलॉजिकल ब्लिंकर शुड गो अवे। ऑल राइट, देन you write below that, you wrote about the insurance scheme, right? Yeah. Right. Then you write below that, next point, fourth अब आप लिखना, मतलब third था financial inclusion, अब fourth लिखोगे आप। You wrote PM Jan Arogya Yojana, right? That was the last thing. I just wanted you to know these insurance schemes. That is it. अब मैं आपको fourth बता रहा हूँ. You write fourth. First, again I repeat, first was Manrega, second PDS, third financial inclusion, now fourth, all right? So in fourth you write, promoting infrastructure development, I'm deliberately not doing it here, I'll bring it at a later stage. Employment के साथ जोड़ता हूँ मैं उसको. You write, infrastructure development and within that you write growth of physical infrastructure, growth of physical infrastructure leads to growth of physical infrastructure leads to better participation possibilities, for poors in economic system. For example, an electrification scheme, covering all individuals, an electrification scheme covering all individuals like सहज बिजली हर घर योजना, इस स्कीम का नाम है सौभाग्य। This scheme was launched in September 2017 with objective to provide electricity connection to each household which demands it. This scheme has a budget of 16,500 crore and it targeted 3.5 crore households who were without electricity in India. It targeted 3.5 crore households who were without electricity in India. All right, 3.5 crore households when we look at. Now remember, I'll tell you how the story unfolded. The story unfolded as this, that in 2017,
the government completed Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. Like earlier it was introduced in 2006 in India. It was called Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana. In layman terms, take it as this, that in 2006, government started with a program to electrify all villages of India so that India is fully electrified over a period. This complete electrification of India was achieved in 2017. In 2014, this Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana had been changed in name to Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. ठीक है, बस सेम स्कीम था, नाम बदल दिए. तो 2014 से वो शुरुआत हो गई. Now, in 2017, the government claimed that we have electrified all villages of India, and now we have been successful in making sure that entire India is electrified. अब एक बात समझिएगा, electrification का एक rule था इस process में. The rule was that all community centers should be electrified, like schools, hospitals, etc. And 10% of the household should be electrified. अगर 100 फैमिलीज रह रही हैं गांव में, तो अगर 10 फैमिलीज इलेक्ट्रीफाइड हैं और साथ में स्कूल की बिल्डिंग, पंचायत की बिल्डिंग, हेल्थ केयर की बिल्डिंग, सेंटर की बिल्डिंग इलेक्ट्रीफाइड है, तो उसे आप इलेक्ट्रिफिकेशन मानते थे. ऑलराइट, सो व्हेन गवर्नमेंट क्लेम्ड दिस दैट वी हैव इलेक्ट्रीफाइड ऑल द विलेजेस इन इंडिया, अगेन आवर गवर्नमेंट बीइंग द गवर्नमेंट, तो उन्होंने ऐसा प्रेजेंट किया दैट दे आर द वंस हु कंप्लीटेड दिस इलेक्ट्रिफिकेशन. यू नो दैट कुछ उनके जो सपोर्टर हैं वो बोलने भी लगे 75 साल में नहीं हुआ, देखो इलेक्ट्रीफाई हो गया पूरा भारत. बट एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना में भारत के सारे गांव इलेक्ट्रीफाई हो गए थे 17,468 को छोड़कर. अपार्ट फ्रॉम 17,468 villages, all other villages had been electrified by the time current government came to power. So they actually electrified the last 17,468 villages which were left to be electrified. Now there is no problem in that. Governments are for that. It's a continuity. एक सरकार काम शुरू करेंगे, दूसरे पूरा करेंगे. ये शुरुआत इस चीज की अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय हो गई थी with the Central Electricity Regulatory Corporation Act. So it had all started way back. But now the opposition also hits back now. So opposition says, oh, you have not electrified India. You have electrified only 10% of the rural areas, and this is no electrification. Thankfully, then the government took up this challenge. So in September 2017, the government announced this Sehaj Bijli Har Ghar Yojana, and they said that we are setting up this money, and we will target these 3.5 crore households in India who are living without electricity. So they said that each household will be given a minimum of 1 bulb socket with 5 LED bulbs free, 1 plug and 1 fan कनेक्शन. ये सरकार ने प्रॉमिस किया सौभाग्य स्कीम में कि जो भी हाउस होल्ड हैं उन्हें कम से कम ये मिलेगा 1 bulb socket with 5 LED bulbs, 1 fan and 1 plug connection. ऑलराइट, ये चीजें मिलेंगी जरूर एज मिनिमम इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर पीपल. और ये भी कहा दैट वेर एवर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल, सोलर एनर्जी विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड दिस. That wherever thermal electricity is not available, solar energy will be used to provide this. And they also said that there will be no installation fee for people above poverty line, for people below poverty line, and people above poverty line have to pay 500 rupees. All right, so 2 things I said: solar power in absence of ग्रिड कनेक्टिविटी. अगर थर्मल ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है तो सोलर पावर मिलेगा, एंड नो इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर पीपल below poverty line
For people above poverty line, people above poverty line, rupees 500 to be paid in 10 equal installments. For people above poverty line, rupees 500 to be paid in 10 equal installments. So this was the Saubhagya scheme that we looked at. All right, this was the Saubhagya scheme that we looked at. By 2022, government had covered 3.05 crore out of 3.5 crore. 3 करोड़ 5 लाख लोग कवर हो गए थे 3 करोड़ 50 में से लोग मतलब फैमिलीज गवर्नमेंट ने बोला रेस्ट 45 lakh cannot be covered because they are moving people, you know, nomadic in nature, so they will be at one place then they move to another place, so not possible to give them any in situ electrification. That is not possible, but others have been given electrification under the scheme. अब यहीं पे क्या है, अच्छा इसमें एक और बात है, there is 5 years of free maintenance and repair. You know, 5 years of free maintenance and repair. बस इसमें अगेन पुअर्स को हैंड होल्ड करना होगा फॉर एटलीस्ट 10-15 years, training them how to use electricity, making their efficiency higher, because right now since they are not trained, it becomes a trouble part. All right, that is a big trouble part. जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे ये 5 LED बल्ब्स फ्री मिले, लोगों ने 4 बेच दिया. तो ये लैक ऑफ ट्रेनिंग है कि उनको लगा अच्छा ये 5 हैं, चलो 4 बेच के पैसा ले लेते हैं, एक जो है वो तो रहेगा ही, अभी बल्ब लगा हुआ है. सो नॉट हैविंग द विजडम दैट यू नीड टू कीप इट विथ योरसेल्फ टू कंटिन्यू ऑन थिंग्स. तो ये हमारे चैलेंजेस हैं जरूर, दैट वी नीड टू ट्रेन आवर पुअर्स हाउ टू गेट थिंग्स डन बेटर. आई एम श्योर वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, so we continue with the story then. So Sahaj Bijli Har Ghar Yojana is one. This is electrification. In the same thing, you continue writing. It also includes road development. It also includes road development like प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, which has the objective to develop rural roads and improve their connectivity to the market. In the same thing, you write, in the first phase, from 2000 to 2010, more than 3 lakh kilometers of rural roads, were constructed and developed. In the second phase,
In the second phase, from 2013 to 2019, another 50,000 kilometers of rural roads, another 50,000 kilometers of rural roads have been developed along with development of market infrastructure connected by these roads. Development of market infrastructure connected by these roads. Full stop. From 2019, the third phase of the program, has started targeting more than 1 lakh kilometer of road development, more than 1 lakh kilometer of road development, along with construction of school building, and hospital buildings, for better civic amenities. All right? See, what we are trying to do here, please understand this, and again from your optional and GS both point of view this becomes relevant. What we are trying to do here is establish that infrastructure is important not only from the point of view of efficiency. Of course it is important for efficiency, but it is also important for distribution. Again, many people don't get that. Infrastructure आप develop करेंगे तो spread effect होता है, backwash effect की जगह, क्योंकि फिर आप connectivity देंगे, electrification देंगे, so you create mechanization in rural areas, you will create education facilities in rural areas. Road development will imply that you are connecting people in rural areas so they can live in the rural area and work in the urban area. You understand that? So all those facilities start getting developed as connectivity, electrification, etc. starts developing. So again I repeat, infrastructure does contribute to efficiency. आपका fuel efficiency बढ़ जाता है, आपके logistical cost कम हो जाते हैं, तो efficiency को तो contribute करता है infrastructure. आप electrification कर लेंगे तो machines use हो जाएंगी. लेकिन जब infrastructure आप develop करते हैं, that also develops your equity. Inclusive growth, because better infrastructure is better opportunity, and better opportunity is empowerment for many poors who otherwise don't get it. You understand that? So this is how you should always look at it. Again, क्योंकि again जो newspaper आप पढ़ते हैं उसमें बार-बार ये लिख दिया जाता है कि infrastructure development से क्या होगा, गरीबों को क्या ही फायदा है infrastructure development से. Infrastructure development से गरीबों को direct फायदा है. ये भी नहीं कि कोई इनडायरेक्ट फायदा है, डायरेक्ट फायदा है. हाँ, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, जैसे एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं. इट कांट बी एनी, लाइक इफ यू मेक अ नेशनल हाईवे, दैट might affect the poor not as much. So of course they will get a job, no doubt about it, when you develop a national highway. So they will get a job and on construction, and there will be a multiplier effect, and they might get more opportunities. But when you make a Gram Sadak Yojana, or when you are developing a Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, then you are directly targeting people who are getting benefited by that. You understand that? And one cannot ignore these schemes just because one doesn't like the government. क्योंकि आप देखेंगे इन स्कीम्स की चर्चा ही नहीं होती अखबारों में, अगर होती है तो इसके इन वन डिस्ट्रिक्ट, इन वन स्टेट इट हैज बीन फाउंड दैट दिस इज लैकिंग. That cannot be the way to analyze the schemes of the government. It makes a huge difference on the ground for many people. That is what one has to understand.
And again, I repeat, end of the day, it is the state government. Central government can bring up n number of such schemes, but unless the state governments are not working good on it, it won't bring a difference. That is where, again, one has to be conscious that in some cases, the state governments might not have the wherewithal to do it. For example, the hilly regions of India. इसीलिए उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बनाया जाता है, क्योंकि उनके पास वो wherewithal ही नहीं है, कैसे वो अपना खर्चा कर पाएंगे, चीज़ें मैनेज कर पाएंगे. So you need to make sure, border states of India is another challenging aspect, that you need to make sure that they get money on time and they are developed well. You know, that is the aspect to keep in mind. But this is there, that, and मैं आपको एक और example दे रहा हूँ इसमें, बस आप example के लिए लिख के रख लो. It also involves communication development. It also involves communication development as reflected by telecom revolution and digital expansion observed in India. And in the same thing you write, government schemes like BharatNet, can improve this growth. BharatNet can improve this growth. BharatNet is, I'm sure all of you have heard of it, broadband connectivity all over India, even to the rural areas. So if we can actually give broadband connectivity in rural areas of India, that can be a game changer. आप सोच के देखिए, अगर कोई गांव है, अभी तो हम सोच ही सकते हैं बस, लेकिन अगर कुछ चीज़ें उनमें से ट्रू हो गई हैं तो अब सोचा जा सकता है. If there is a village with well-connected roads and village with proper electrification and village with broadband facility, it can actually attract many people who need these couple of things to live their life, and they don't have to travel far and wide, and they will be happier rather than living in a cosmopolitan and rubbing shoulders every day and meeting people every day. They may not prefer it. One example is yours truly. You know, but other than that, some examples can be some of you. Given a chance, you would rather prefer some solace and some creative thinking and some isolation along with good civic amenities. The important thing is that अगर आपके civic amenities weak हैं तो villages painful हो जाते हैं. तो अभी हम बात कर रहे थे ना, डॉक्टर्स रिपोर्ट नहीं करते या लोग नहीं जाते, तो क्योंकि civic amenities weak हो जाती है, लोग कहते हैं जाने दो, नहीं जाते यहाँ. और डिमांड क्यों नहीं आती इस चीज़ की? Because people are used to living like that for years. So they don't even realize what they are not getting. The thing is that, you know, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या नहीं मिल रहा उन्हें. तो यही दुनिया है, ऐसे ही चलेगा. आप कभी कभी देखेंगे विलेजेस से कभी लैंड बेच के लोग शहर आते हैं, आप देखेंगे, और शहर में जगह लेते हैं, तो वो शहर पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेके परेशान नहीं है, क्योंकि जो उनको दिख रहा है वो उससे बेहतर है जो उनको गाँव में था. वो इस बात से खुश है, चलो मैं शहर अब आ गया, मैं सेटल करूँगा यहाँ. बट दैट इज़ वेयर वी नीड टू डेवलप द एस्पिरेशंस. That there has to be all-weather roads, there has to be good sanitation facility, there has to be proper medical support, there has to be better education support. Once that starts developing and it becomes, आप कहेंगे सर ये तो आप बोल रहे हैं तो सपना में देखने वाली बात है, पर आप सोचिए जहाँ 60% भारत रहता है वहीं तो इलेक्टरल दम है ना. ये तो बस किसी को उनको समझाने की जरूरत है that you have the electoral might. Ask for it, they will have to give it to you. समझाने वाले लोग क्या समझा रहे हैं? आस्क फॉर अ मिनिमम एमएसपी. और समझिए ये जिसने भी फॉर्मुलेट किए हैं ये demands for the farmers there, because farmers won't be formulating it, somebody has sit down and formulated it, is a very interesting person. This person says walk out of FTAs. Now why should I walk out of a South Korea India CEPA which doesn't have agriculture in it? Why should I walk out of Japan India CEPA which doesn't have agriculture in it?
This person says walk out of WTO. But with WTO, we have discussed it, I hope you would recollect, we have already signed a peace clause and there is no question they can put any pressure on us for MSP. With WTO, in any case, agricultural exports and imports, we don't do according to that rule. Government bans exports overnight, government allows imports overnight. So why walk out of WTO? Then it says 700 rupees Manrega fee minimum. Okay, fair enough. But if you pay 700 rupees to a Manrega worker, how will it keep rural economy viable? 700 रुपया तो अर्बन एरिया में पर डे नहीं मिल रहा लेबर को, तो कैसे वायबिलिटी कैसे आएगी? क्योंकि अगर आप मनरेगा फी 700 देंगे तो फिर इसका मतलब जो एग्रीकल्चर पे फील्ड पे वर्कर काम करेगा वो भी 700 मांगेगा कम से कम। कौन से किसान 700 देके वर्कर रख सकते हैं पर डे? कुछ लोग कहते हैं नहीं, देखिए रूरल एरिया में वर्कर को पैसे मिलने चाहिए। मैं तो खुद कहता हूं दैट मनी शुड बी गिवन टू रूरल एरिया, बट इंपॉर्टेंट इज 700, वेयर आर यू गेटिंग दैट फिगर फ्रॉम? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 700 पर डे, दैट्स फिनोमिनल। वी आर टॉकिंग एट समथिंग लाइक 17,000-18,000 रुपीज पर मंथ assured income under Manrega. You know, how do you manage that? How do you make things feasible? Workers are already getting 400 rupees, 350 rupees, 450 rupees per day, depending on which rural area you are talking about. अच्छा चलिए, मेरी बात को बस establish करने को कह रहा हूँ. I'm just saying this to establish my words. When you go to your rural areas, many of you would be going, and your grandparents, parents, uncles, aunts, people would be doing कल्टीवेशन। एक कॉमन बात आप क्या सुनेंगे आज गांव में? लेबर महंगा हो गया है। तो अगर 350-400 में लेबर महंगा हो गया है और मांग है 700 दे दो, कहां से देंगे? इफ द फार्मर इज फाइंडिंग 400 कॉस्टली और द बिजनेस इज फाइंडिंग 400 पर डे कॉस्टली, हु विल अफोर्ड 700? तो आप सोच के देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मुलेशन ऑफ डिमांड्स दैट हैव बीन मेड, completely blinkered about what will be the implication. Go ahead and demand whatever comes to the mind, even if it is not viable. And what is the trouble here? ये तो classroom है, खैर मैं तो open space में भी बोल देता हूँ, because जहाँ मैं convinced हूँ वहाँ मैं convinced हूँ. But open space में बोलने में मैं देखता हूँ many intellectuals are worried that they will be branded anti-farmer. I mean, where is anti-farmer in this? The important question is, can we afford it? And if we can't afford it, how do we promise it? And most importantly, how do farmers know about the WTO impact or the FTA impact? That is again a larger question to ask. किसने उनको पढ़ाई ये बातें? कोई तो पढ़ा रहे होंगे जिनके बेसिस पे ये बातें हो रही हैं कि हाँ 700 मांग लो, WTO से वॉकआउट मांग लो, FTA से वॉकआउट मांग लो, ये सारे बात तुम मांग लो, अपनी मांगो, और मिनिमम MSP की बात तो खैर करो ही। So somebody is framing it, and that somebody is leaning ideological is very clear in the demands that we see. And that is the dangerous aspect. क्योंकि जब आप ideological leaning के साथ demand करेंगे तो आपका demand fructify कैसे होगा? आप सोच के देखिए, क्योंकि आप तो मांग रहे हैं लेकिन वो देने की हालत ही में नहीं है सामने वाले। तो ये समझा रहा हूं, आप सोच के आप एक और बात सोच के देखिए, शहरों में 700 रुपया पर डे नहीं कमा रहे लेबर। In cities, people are not being paid 700 per day. Where is the logic of 700 per day coming in again, and walk out of FTA, walk out of WTO, all those things that come in is what we need to be very careful about. That if this is bargaining chip, it's very amazing. But if it is not a bargaining chip, one will have to be careful. Where are we taking ourselves then? अब मैं इसका solution बताता हूँ कैसे करने चाहिए इन चीजों में। There should be a political consensus always developed on this. That is what mature democracies do. The government and opposition should always come together, discuss among each other what is feasible. Because those who are in opposition today might be in government tomorrow. Then you got to fulfill the demand. So what is feasible? Imagine today, if all political parties tell the farmers that, look, we can promise you a 350 rupees in Manrega, that also depending on the state's inflation. We can promise you something like 1.5 times A2 plus FL, and in some crops, like say oil seeds or crops like pulses, we can promise you 1.5 times C2. That kind of a thing, if it is done, then people will understand that, look, nobody is pleasing me. मैं आपको एक मजाक में बोल रहा हूँ, but आप सोचिएगा,
हमारे दो तरह के पेरेंट्स होते हैं। एक पेरेंट होंगे जो गुड कॉप हैं, एक बैड कॉप हैं, ठीक है। एक है जो आपकी बात कहेंगे हाँ हाँ चलो बेटा आओ बच्चे, एक है जो थोड़े सख्त हैं। लेकिन जिस जगह पे आप गड़बड़ करने के हालत में होते हैं, वहाँ जो आपके पेरेंट्स सपोजिटली लिबरल हैं, आप उनको भी देखेंगे दे पुट द फुट डाउन, ऐसे ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं कर पाओगे। ये अंडरस्टैंडिंग है दोनों की कि भाई ये गड़बड़ है, ये तो इसमें तो बच्चे की हालत खराब हो जाएगी। यहाँ तो सवाल ही नहीं है कि इनको प्लीज किया जाए। नो पॉपुलिज्म हियर एंड देयर कांट बी अ गुड कॉप बैड कॉप हियर। राइट स्टेप, राइट डिसीजन, दोनों मिलकर बोलेंगे ये नहीं कर सकते तुम, तो वही ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को करना है। दोनों मिलकर बोले कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, ये फीजिबल कंडीशन है, ये इनफीजिबल है। You take a call based on that. Once the opposition, the government, the participation of Bhagwant Manji in this whole process is a very welcome step. वो जरूर होना चाहिए। एक तो वो रूलिंग पार्टी से नहीं है जो सेंटर में है, but more importantly it's about an opposition participation due to which there is some credibility to the discussion happening. And everybody knows that, okay, there are others also talking about it. There should be participation from other political parties with practical sense. It should not be again emotional सोचने से गड़बड़ होती है। जब आप इमोशनली सोचेंगे नहीं सर हमें तो चाहिए, किसान 12 घंटे खेत में काम करता है, रिक्शे वाला भी करता है, समझना पड़ेगा, ये ठेले वाला भी करता है, फूल बेचने वाला भी करता है, नहीं है ना उनकी इनकम हाई, क्यों? प्रोडक्टिविटी लो है। तो मुद्दा ये नहीं है कि किसान की इनकम बढ़ाई जाए या नहीं, वो तो बढ़नी ही चाहिए। मुद्दा यह है बढ़ाई कैसे जाए, हाउ डू यू increase that income? The question is not whether we should increase it or not, it's got to increase. How to increase it? That how to increase it, the answer lies in productivity. That is the word we should focus on. Make people more productive to make them earning high. आपकी हायर अर्निंग उस बात पे डिपेंड करेंगी कि आप कितने एफिशिएंट हैं, कितने प्रोडक्टिव हैं। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, कैसे आपकी अर्निंग हाई होगी? तो इसीलिए ध्यान तो उस पर होना चाहिए। हाउ डू यू मेक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव? वी हैव ऑलरेडी डन अ डिस्कशन ऑन दैट विल बिकम योर पार्ट ऑफ द आंसर देन। दैट द फोकस हैज टू बी ऑन रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, एंड दैट इज, एंड व्हाई डू आई कनेक्ट इट टू पॉवर्टी? क्यों मैं ये डिस्कशन पॉवर्टी में लाया? बिकॉज maximum number of our poors, real poors, are in the rural areas, stuck up in agriculture. तभी ये पॉवर्टी से कनेक्टेड। अगर आप एग्रीकल्चर डेवलप करेंगे, आप पॉवर्टी अलिविएट करेंगे। यू रिमूव पॉवर्टी इफ यू, और यू रिड्यूस पॉवर्टी इफ यू इंप्रूव एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर इंप्रूव करेंगे तो क्या होगा? रूरल वेजेस विल इंप्रूव, प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीजिंग विल मीन फूड अवेलेबिलिटी विल इंप्रूव. Increase in food availability, food inflation is in control. Improved rural productivity, income of rural areas are better. So that is where your poverty gets controlled. आपको वही एरिया तो टारगेट करना है जो मेजॉरिटी ऑफ पुअर्स हैं जहां पे। तो इसीलिए एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं पॉवर्टी में, इन केस तुम मैप नहीं कर पा रहे थे अगर, तो कि कहां भटकता हुआ पहुंचाइए कि अगर आप, जब तक आप एग्रीकल्चर की बात नहीं करेंगे, पॉवर्टी कैसे ठीक होगी? तो इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप जो भी स्कीम रन करें उसमें कनेक्टिविटी दें, इसीलिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। और अब मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ वाई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेसेसरी। व्हाट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, सैनिटेशन, दैट इज़ द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ वेरी नेसेसरी। ये सारी बात आज हम और आप समझ पा रहे हैं, डिस्कशन कर पा रहे हैं। आप IAS बनने का सपना देख पा रहे हो क्योंकि आप पढ़े लिखे हो गए ना। और आप क्यों पढ़े लिखे हो गए? हाउ डिड यू गेट एजुकेटेड? बिकॉज यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेटेड। अंडरस्टैंड दैट, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। एक ऐसे फैमिली में बर्थ हो गया जहां पढ़ लिख गए तो ग्रो कर गए। 24.5-25 ईयर्स में अगर मेरी PhD हो गई तो उसका कारण बस इतना था कि फैमिली में लोग थे जो खूब धक्का मारते थे पढ़ने को, पढ़ वे डबल प्रमोशन करा देते थे और दया भी नहीं दिखाते थे। डबल प्रमोशन करा के बोलते थे अब यहाँ इस क्लास में फर्स्ट आके दिखाओ। बिठा दिया दोस्त 1 साल बड़े लोगों के साथ, बोलते फर्स्ट आ जाओ। एक और डबल प्रमोशन करा दिया, फिर बोले अब यहाँ फर्स्ट आके दिखाओ। बच्चे को क्या पता होता है क्या होता है, पढ़े जा रहे हैं, लगा कुछ हो ही जाएगा। पेरेंट्स आर हैप्पी, पीपल आर हैप्पी, एंड आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम गेटिंग दोज accolades. But important is parents were there to push, or somebody was around to push. Do this, you can do it. You are capable. That is my limited point. आप अच्छे कॉलेज में जब गए, अच्छे कॉलेज मतलब कॉलेज के peers मिले, आप पढ़ने लगे, उनको भी वो भी पढ़ने लगे, पढ़ना सिखा दिया एक दूसरे को, तो ज़्यादा कंपटीशन मिल गया।
ये आपको समझा रहा हूं that when you are increasing the competition you make people better off, but when will you make people competitive? आप अगर मान लीजिए कहेंगे हाँ हाँ सर सही बात है, सबको compete करना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, सब बराबरी पे compete करें, लेकिन बराबरी पे तो शुरू ही नहीं कर रहे हैं ना। अगर एक रेस चल रही है और एक आदमी यहां शुरू कर रहे हैं और एक आदमी यहां, तो कैसे दोनों इक्वल होंगे? कैसे आप कहेंगे कि नहीं नहीं इस वाले को इनके बराबर अपॉर्चुनिटी मिली है? इसीलिए रिजर्वेशन की बात आती है, जिसे मैं रिजर्वेशन बोलने से ज्यादा अफर्मेटिव एक्शन बोलने में बिलीव करता हूं, बिकॉज इट शुड बी एन अफर्मेटिव एक्शन। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विथ यू दैट वी नीड अ डिबेट ऑन रिजर्वेशन, दैट व्हाट काइंड ऑफ वे वी आर गिविंग इट, हाउ वी कैन अफेक्ट मोर पीपल, and that is why I am a big votary that we should have a socio-economic caste census. It will show many truths. Which castes have done well in the last 70 years, which have not done well. पिछले 30 साल में कौन से कास्ट अच्छा किए, मंडलाइजेशन के बाद कौन से कास्ट अच्छा नहीं किए, ज्यादा पता चलेगा फिर। और कंपैरिजन ये नहीं होना चाहिए कि कितने अपर क्लास कास्ट के लोग हायर पोस्ट पे हैं, कितने लोअर पोस्ट पे हैं। कंपैरिजन ये होना चाहिए कि कितने अपर कास्ट के लोग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन हायर पोस्ट पे थे 1970s में या 80s में, और कितने अपर कास्ट के लोग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन हायर पोस्ट पे हैं आज। और सेम चीज की जाए विद ओबीसी, सेम चीज की जाए विद SC ST, एंड देन वी विल हैव अ वेरी गुड एनालिसिस टू नो हु शुड गेट, who has gained, who has not gained, and what should be the future discourse. उसमें बचपना क्या है? What is childishness? Oh, I will do a socio-economic caste census and I will introduce reservation and I will make it 80%. तो राहुल गांधी जी का बोलना मुझे समझ आता है, क्योंकि वो आउट ऑफ पावर हैं, तो पावर में वापस आने के लिए लोग कुछ भी बात करते हैं, लेकिन ये सेंसिबल नहीं है। इट्स, यू कांट से दैट 80% पॉपुलेशन मीन्स 80% रिजर्वेशन। Representation, you can say. And maybe he can send an example, I hope he does. So he can set an example by giving seats proportionately, at least in Bihar, where socio-economic caste census has happened. Proportional representation की शुरुआत अपनी पार्टी से ही कर ले, कि मैं उसी को सीट दूंगा जो पर्टिकुलर कम्युनिटी से हैं और रिजर्वेशन मैं कर रहा हूं अपनी पार्टी में, तब तो वो सीरियस दिखेंगे ना। बट वो तो चुनते हैं विनेबल कैंडिडेट। वो से मेरा तो सिर्फ राहुल गांधी जी नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने वक्त में चुनेंगे विनेबल कैंडिडेट, दूसरे वक्त में बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन। तो यही हिपोक्रेसी है जिससे हमारे पुअर्स डिप्राइव हो जाते हैं। दैट देन वी आर इन अ कास्ट वॉर, वी आर इन अ रिलीजियस वॉर, everybody bothers about who is from which caste rather than asking for more jobs from the government, that create more jobs so that I don't need a reservation. Give me empowerment so that I don't need a reservation. You know, that has to be the final dream, no? That nobody needs a reservation in this country. So we should talk about that final dream rather than other way around. So that was my limited point to you. Poverty से ये सारी बातें connected है. आप हमेशा सब बातों को connect करके लिखेंगे. Alright, that it's all connected to poverty. और यही सारी बातें फिर inequality से connect हो जाती हैं. All these things, whatever I am teaching you under poverty, automatically makes sense under inequality or the debate of inequality. Okay, you please write the fifth point then. You write promotion of social infrastructure, promotion of social infrastructure and within that you write government has promoted education development through schemes like समग्र शिक्षा अभियान, SAMAGRA, समग्र is aggregative or complete, holistic. समग्र शिक्षा अभियान. Now this is actually Sarva Shiksha Abhiyan 2.0. There was a total literacy mission. That is what was going on. The government says that we are upgrading total literacy mission and we are making it a holistic literacy mission. That it won't only be literacy for all, it will also be functional literacy for all. Alright, that everybody should actually read and write and learn and so on. So functional literacy for all. Samagra Shiksha Abhiyan, a holistic literacy mission.
समग्र शिक्षा अभियान, कमा, ई पाठशाला, PAATHSHALA, ई पाठशाला. ई पाठशाला is electronically connecting people to have distant learning program. ई पाठशाला, कमा, PM कौशल विकास योजना, PM कौशल विकास योजना, कमा, establishment of institutes of higher education, establishment of institutes of higher education, like multiple IITs, comma, IIMs, AIMS, etc. And identifying universities as institutes of eminence, अब वहाँ भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स तगड़े हैं. हमने एक जियो यूनिवर्सिटी को आइडेंटिफाई किया था एज इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस. उस पर खूब हंगामा भी हुआ था कि रिलायंस को फेवर कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी है ही नहीं वो कैसे आईओई बनेगी, हाउ कैन दैट बी एन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस. ऑल सेड एंड डन, लास्ट 6 years Geo University has been able to offer only 2 courses because they are not getting clearance from the same government that identified them as the IOE. This is the contradiction in our functioning that we have. कि वही सरकार IOE बनाते हैं और उसी सरकार के अंदर कुछ लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में जो कहते हैं ये परमिशन नहीं, वो परमिशन नहीं, यहाँ रुको, वहाँ रुको. तो 6 साल में 2 कोर्स ऑफर कर पा रहे हैं जियो यूनिवर्सिटी, और वो भी 2 कोर्सेज, एक फार्मास्यूटिकल पे है और एक मैनेजमेंट पे है. मतलब none of those courses are regular courses that they could offer and actually become a competition to other universities. So this is something, because remember, we are now developing some very good private universities even in human sciences. So India is looking at that. And there are many, I mean, there are 7, 8 coming to my mind right now, who are doing pretty well for themselves, some good research work happening, some good teaching faculties being hired. तो ये हमें डेवलप करते रहना चाहिए. अगर हम एक बार ये डेवलप करेंगे, then the public universities will face competition and they might just buckle themselves up a little more. You know, that is what is important. अभी public universities में competition नहीं है. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ colleges खराब हैं या teachers खराब हैं, लेकिन course structure ज़रूर खराब है. You know, contemporary course structure होना चाहिए. जो दुनिया भर में लोग पढ़ रहे हैं वही आप पढ़ें ना. आप अगर वो पढ़ेंगे जो दुनिया में लोग 20 साल पहले पढ़ रहे थे या 15 साल पहले पढ़ रहे थे, या उस तरह से पढ़ाए जाएंगे जैसे 15 साल पहले पढ़ाया जाता था. You know, if you are taught in a manner which was taught 10 years back or 15 years back, or you are taught course which were 15 years ago, you know, that is something we need to call a hoot on, that this should not happen. We should have modernization of course, we should have modernization of teaching amenities. Most importantly, in a college room or a college teaching, the most aversive thing I find is caged in a classroom. You know, कॉलेज में 25 लोग हैं क्लासरूम में, 30 हैं, 40 हैं, 25-40 लोगों का ऑल टाइम इंटरेक्शन होना चाहिए टीचर्स के साथ. डीयू से मुझे एक और नाराजगी रहती है, 50 मिनट की क्लास, 45 मिनट की क्लास. जब तक मैं वार्म अप हुआ सोचने के लिए, क्लास ही खत्म हो गई. यू नो, और कभी कभी कुछ टीचर्स तो 10 मिनट का अटेंडेंस भी लगाते हैं. सो द इफेक्टिव टाइम ऑफ द क्लास इज 30 minutes, 25 minutes, 35 minutes. You can't teach people every day. जरूरत नहीं है. उससे अच्छा क्या करिए, एक सब्जेक्ट की क्लास एक दिन होगी वीक में और 3 घंटे होगी. आप बैठिए, इंटरैक्ट करिए टीचर के साथ, टीचर्स अपना व्यू देंगे, स्टूडेंट्स अपना व्यू दें, और रीड करके आए स्टूडेंट्स, टीचर इन एडवांस बोल दें कि आपको आज ये रीडिंग पढ़ के आनी है, और सवाल पूछेंगे आपसे, और उस बेसिस पे आपका इंटरनल असेसमेंट होगा.
So then the students will do some brainstorming, the teacher is doing brainstorming with them, some good literature will come out of that, and that is education at the college level. Because students, जब मैं आपसे मिलता हूँ, आपके पहले भी मिला और उम्मीद है बाद में भी मिलूंगा, you are full of questions, inquisitiveness, you know, so why not satiate it at college level itself and make great economists out of you, rather, at least some of you, rather than pushing everybody towards bureaucracy. तुम में से काफ़ी लोग हैं जो 8-10 लोग जो इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन अब तो तुमने अपना करियर खैर चूज किया तो जो बनना चाहते हो वही बनो, लेकिन अगर वो बनते तो इंडिया का ही फायदा था ना. But somebody has to give you direction that be an economist, come along and we guide you. But वो 35 मिनट की क्लास में कैसे होगा? उसके लिए तो 2-3 घंटे की ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूरी है, कम से कम यहीं से बदलाओ. आखिरी सेमेस्टर में एक थीसिस लिखने को दें, बोले आपका आखिरी सेमेस्टर कुछ नहीं करना, नो एक्स्ट्रा पेपर, एक थीसिस आप लिखेंगे और पूरा सेमेस्टर उसी थीसिस पे राइटिंग पे स्पेंड करेंगे. और आपके एक गाइड होंगे, आप किसी भी टीचर को पकड़िए और टीचर आपको पकड़ेंगे और गाइड आपको गाइड करेंगे हाउ टू राइट अ थीसिस पेपर. तुम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करोगे, मार्केट में मूव करोगे, लोगों से मिलोगे, क्योंकि सीख तो गए जितनी चीज अपनी सब्जेक्ट सीखना था. 7 सेमेस्टर्स कम थोड़े ही है, या 5 सेमेस्टर्स फॉर दैट मैटर. यूज योर लास्ट सेमेस्टर टू अप्लाई व्हाट यू रेड. Go ahead, meet people, collect primary data, do regression equations, solve questions, and then the teacher keeps guiding you. Present a thesis in front of external invigilators and see how it all comes out. तुम्हें रिसर्च करना सिखा दिया इस तरह से. तब जिनको रिसर्च एप्टीट्यूड है वो रिसर्चर बनेंगे. नहीं तो हम क्या बोलते हैं, इंडिया स्पेंड्स लेस देन 1% ऑन R&D. खर्च कर लो ज्यादा, करने वाले कितने लोग हैं? पढ़े लिखे लोग मुझसे पूछते हैं इकोनॉमिक्स में क्या रिसर्च करते हो, आइडिया ही नहीं लोगों को. एजुकेटेड पीपल दे आस्क मी इकोनॉमिक्स में क्या रिसर्च, आलू प्याज का दाम पता कर. So I also laugh it off because that is how it is meant to. But think of it, I feel surprised internally that an educated person doesn't know how humanities field we can make a research thing on. अपने बच्चों को खुद ही बोलते हैं हिस्ट्री मत पढ़ो, उसमें स्कोप नहीं है. न्यूजिमैटिक्स है, मेडिवल लिटरेचर ऑन हिस्ट्री है, फिलाटेली है, कैलीग्राफी है. हिस्ट्री के इतने सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप खूब सारे पैसे भी कमा सकते हैं और खूब सारा रिसर्च कर सकते हैं. हमें नहीं पता होता तो हम कहते हैं कोई हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं है, तुम हिस्ट्री मत पढ़ो. ये तो हमारी रुकावट आपकी रुकावट बन गई ना फिर. That my restriction becomes your restriction because I could never guide you towards the right path being your senior. This is the challenge we face. This is what I am calling capability building. ये सिर्फ गरीब लोगों पे applied नहीं है, ये अमीर लोगों पे भी applied है, क्योंकि वो capability build नहीं करते in the stereotype that with which we have existed for 30 years in a world which has been changing with fourth industrial revolution for 30 years. That is the paradox. आँख के आगे fourth IR हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, हम अभी भी कह रहे नहीं 7 बजे उठ, बेल्ट बांध, टाई लगा, जा स्कूल, बैच बांध लियो साथ में. That is not the way to train the next generation. We are not going to make them wonderful thinkers doing that. Make them think, make them creative. And that is what the schooling should be about or college should be about. तो आप दिमाग में रखेंगे जब भी ये सवाल आए, मैं आपको काफ़ी इनपुट्स इस पे देता रहता हूँ, because I'm expecting a question about new methods of education or training and how India can learn from it. Good part about India is we don't even have to unlearn many people because we have never taught anything to anyone. So teach them correct. Unlearn तो तब आएगा ना. देखो unlearn मतलब क्या हुआ? I have learned, now I have to forget and learn something new. If I have not learned anything, I don't have to forget anything. So you don't have to make me unlearn. I'll just learn. I don't have to relearn. India has that advantage. We just make people learn the right way. So if we can do that, I think that is where the key factor lies. That unless आपको मैं बताता हूँ, अगर मुझसे पूछिए कुछ इनोवेटिव सजाएं बनाई हैं मैंने, पनिशमेंट्स. कोई बच्चा मान लीजिए बदमाशी कर रहे हैं, आप हम उनको क्या बोलते हैं, स्टिक मार दिए या गेट के बाहर खड़ा कर दिए. मत करिए. 4 मैथ्स के क्वेश्चन दीजिए और बोलिए इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अब तुम सॉल्व करो इसे बैठ के अगले 1 घंटे, और नजर नहीं उठाना है, तुम्हें सॉल्व करो. और अगर सॉल्व कर लोगे ये 4 क्वेश्चन में से 2 भी तुम 1 घंटे के अंदर, तो उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा. ये स्टूडेंट को इंसेंटिवाइज करती है ना. और 4 स्टेप कर लो तब मुझे बुलाओ, मैं तुम्हें हिंट भी दूंगा. तो सोचेंगे क्या करना है. 4 स्टेप करेंगे, बुलाएंगे, अब क्या करें, आप एक छोटा सा हिंट दे दीजिए, हट जाइए. उनको पनिशमेंट मिली हुई है सपोजिटली,
और वो प्रोडक्टिवली ऑक्यूपाइड है। लेकिन जब हम पनिशमेंट देते हैं क्लास में, वहां खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो जाता है, बाकी क्लास को देख के आया कर रहा होता है, क्लास हंस रही होती है उसको देखकर तो ये क्या पनिशमेंट हुआ, वहां खड़े हो जाओ। फिर टीचर और गुस्सा होते होते दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ बताइए क्या जोक बनाया हमने पढ़ाई का। We don't call our children to torture them in school. We call them to teach them. Teach them well and teach them by different methods. Create techniques in that. So there are techniques to do that, but that is what we need to learn and teach. So please keep these things in mind about how we can make education, healthcare the next big thing in India. आप समझिए ये इंडिया के पास बहुत स्कोप है, because future after fourth AI, fourth industrial revolution will be about care economy, R&D economy, creativity based economy. तो उस हिसाब से हमें खुद को रेडी करना है, that how do we train people in care economy, R&D economy, creativity based economy. If we can train our people into that, then maybe some sense will be seen, say 20 years later. Okay, so you please take this further, change the e-Pathshala you wrote. Sorry, what was the last point that you wrote? Kaushal Vikas Yojana. For eminence, okay, then you change the paragraph and write, similarly, government has initiated healthcare programs practicing preventive healthcare. So what is preventive healthcare? When you prevent the disease from happening. All right, preventive healthcare is when you prevent the disease from happening. So practicing preventive healthcare through Mission Indradhanush, in a bracket you write, vaccination against 12 disease. Vaccination against 12 disease. Close the bracket. Comma. Matru Sahyog Yojana, MATRU, Matru Sahyog, SAHYOG, Matru Sahyog Yojana, YOJANA, Matru Sahyog Yojana. In a bracket you write, nutrition for child and mother. Nutrition for child and mother. Close the bracket. Jal Jeevan Mission. In a bracket you write, water from every tap to provide clean potable water. Water from every tap to provide clean potable water to all the villages. वहाँ भी एक thought process समझना, please keep it in mind. Why do I keep insisting on making people capable? Imagine you make one big effort, the big push as we call it, and you develop a Jal Jeevan, you develop a Saubhagya, you develop a Bharat Mala, a Sagar Mala, you do all that over 20 years. And you have given your people all these facilities. But the people are not capable to use these facilities and are not productive enough, then the country will not be able to earn even sufficient money to do maintenance and repair of these projects and continue with them. And then 20 years later, all this will get dilapidated and somebody in future will have to come and do it all afresh. So even if we are doing that big push on a large scale, we will have to make sure we make the people capable so that they can continuously keep working on the project. अब सोचिए एक मान लीजिए पर्सन है, खूब एफर्ट किया और अपने परिवार के लिए एक घर बना दिए, एंड देन लेकिन अपने बेटे को पढ़ाना भूल गए.
तो उनके बेटे फाइनली क्या करते नजर आएंगे? उसी घर को बेचते हुए, या फिर वो घर खंडर बनेगा। तो यही समझा रहा हूं, इफ द ह्यूमंस आर नॉट केपेबल, then you can create the physical structure, but the humans will not be in a position to even utilize or continue with that structure, because even maintaining that structure will need resources and money, which will come only by capability. So even if we are developing all these projects, a Bharat Mala or a Sagar Mala or a Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, or maybe an electrification scheme all over India, or solar power development, this is big push, no doubt about it. But along with this big push, you need education, healthcare, to make people capable to continue the big push, because इतने बड़े पुश को कंटिन्यू करने के लिए भी आपको अच्छे खासे रिसोर्स लगेंगे फ्यूचर में। नहीं तो जो पोर्ट आज बना वो पुराना होकर ढह जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे पता चला? ये यही तो हुआ भारत में ना, 51 to 71 big push, everything was done, big capital industries, everything created, but people were not capable, so 70s onwards decline began. So we, और फिर से नए सिरे से सब करना पड़ा 90s के बाद। तो ये आपको समझा रहा हूं that we have to focus on education or healthcare for those reasons. In the same thing you write, preventive healthcare, put a comma, स्वच्छ भारत योजना, स्वच्छ भारत योजना in a bracket you write sanitation, close the bracket, etc., to assure that there is less out-of-pocket expenditure. There is less out-of-pocket expenditure. Okay. When I use this term out-of-pocket expenditure, it means the money you have to spend on healthcare from your own private system where the public support is missing. We have a good news in India there. In 2014, before the Jan Arogya Yojana, the out-of-pocket expenditure used to be 65.3%. My source of data is last year's economic survey. We don't have the data after that, but last year's survey is what I'm quoting to you. So 65.3% was the out-of-pocket expenditure till 2014. Now we have started Jan Arogya Yojana after that, and in 2022, it had come down to 48%. So again, you remember the trend. From 65%, तो 100 रुपए अगर खर्च करते थे लोग, 65 rupees will be out of pocket expenditure, the private expenditure by the individual. Now that has come down to 48%, 48 rupees out of 100. So that's an improvement, that out of pocket expenditure is going down. So it will reduce out of pocket expenditure. And why is out of pocket expenditure an important thing? If I am a poor person and my health goes bad, and I have to do a lot of expenditure to get myself well, and I've already lost my job, then that pushes me into secondary poverty. You understand that? So that is the threat due to which we need to make sure that out-of-pocket expenditure can be controlled. Put a comma and write, to reduce the loss of workforce, to reduce the loss of workforce due to illness, and okay, how does that happen? Take a very simple example. Our workforce is around, labor force rather, is around 50 crore people. So there are 50 crore people in India who are either demanding work or working. Imagine, and then our unemployment rate is around 6% approximately. So that puts us at around 47 crore people who are actually working. Now imagine, if we believe all these people, now that's a huge belief, but let's say if we believe that all these people work 8 hours in a day, and say for a second, if they go unwell for 5 days, then we lose 40 hours, per person per day, and multiply it by 47 crore. So that is a huge number we are looking at, that we are losing. We are losing 188 crore hours on a basis, per daily basis, if people are, or say on an annual basis, if people are unwell for even 4 days. अगर लोग 4 दिन के लिए भी बीमार हो गए और अपना काम नहीं कर पाए,
तो एक आदमी अगर 8 घंटे या 5 दिन के लिए बीमार हो गए और एक आदमी 8 घंटे काम करते हैं तो 40 घंटे का काम का नुकसान हो गया। तो अगर 47 करोड़ लोगों के साथ ये हो गया तो आप सोचिए 47 करोड़ इंटू 40, तो आप कुछ 1880 लाख करोड़ 80 करोड़ घंटे का नुकसान सहते हैं साल भर में। फिर दैट इज वर्क आवर लॉस्ट। ऑलराइट, दैट व्हाट आई एम डूइंग इज number of working hours lost multiplied by the laborers in the picture. That is what we are looking at. Then you write next in the same thing, and उसी में आप continue करना, and it also results in reducing the pressure on existing healthcare infrastructure. Reducing the pressure on existing healthcare infrastructure. I hope you gather that also. When we say reducing the pressure on existing healthcare infrastructure, if less people fall ill, then less pressure on the existing infrastructure. So this is about steps taken by the government to remove poverty. If by chance they ask you steps taken by the government to remove inequality, you will write these points only. You will add just one more point, the fiscal steps of progressive taxation. All right, removing inequality में भी आप यही steps लिखेंगे, बस आप एक fiscal step और add करेंगे, progressive taxation, inequality के case में. That government practices progressive taxation to remove inequality. But other than that, the same steps work. You'll be okay on that? You take a heading now, you write inequality in India. Inequality in India. और आप उसके अंदर एक हेडिंग दीजिए, reasons for rise of inequality in India. Reasons for rise of inequality in India in the recent past. Reasons for rise of inequality in India in the recent past. Okay, you write, so what we are discussing is a debate which is happening in India, that inequality at the moment in India is seen to be one of the highest that we have ever seen in India. And this is globally also true, that global level, okay, I'll give you an insight in that. So if you go back to 1910, 1920, 1930s, then we used to see that in America, in England, in Sweden, even in India, the income of top 1% would sometimes be much more than the income of bottom 40%, bottom 50%, and so on. Then it started changing after 1947. And it started changing in India and globally also after the Second World War. It started changing, as I have told you many times, with the impact of communism, because even the Western capitals became conscious that we can't have so much inequality, otherwise the ideology on the other side will become heavy. So, kam hone lag gaya. By the time we reached 1970s, inequality was seen at a comparatively lesser level all across, whether India, whether Germany or Japan or Sweden, elsewhere also. Now this happened due to various reasons. One big reason was welfare state. So when you introduce a welfare state, I'm talking globally here, including India. So when you introduce a welfare state, it means the welfare state will give you civic amenities. So there will be free schooling, and there will be hospital care, and there will be infrastructure developed, and there will be pensions given, and so on. So that was one factor that inequality started falling. Another was progressive taxation. The government started taxing the wealth, the government started taxing income of higher income people. So again, that meant inequality started coming down. Another factor was the impact of public expenditure. For example, I do a public expenditure in rural development. I do a public expenditure in sanitation development. So in that case, what happens is poor who were not able to afford it earlier, now it became affordable for them, and the standard of living started rising. So we see globally that 40 to 80, inequality started falling.
But again, after 1980, the fourth industrial revolution begins, and the Internet of Things and machine learning and artificial intelligence, new innovations, and you will see again big companies like say a Google or an Apple or a Microsoft or an Amazon or a Netflix, so or a Meta, which is Facebook and so on combined. तो ये लोग फिर बड़े होने लगे अमेरिका में. और एक बात और हुई, पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, ट्रेड यूनियन स्टार्टेड वीकनिंग, gig work started rising, people working as gig workers, temporarily working, not always employed, all this started rising. So again, it meant that the real wages were not rising at the same pace as what profits were rising. And again, inequality is seen to be higher. India, post-globalization, grew quick, but grew unequal. And that has become the debating point. Like inequality today in India, with certain estimates, is similar to the inequality India had 100 years ago. And we have gone that distance. Now remember one thing in that. Please understand that. That doesn't mean that the poor in India are as worse off as they were 100 years ago, or even as they were 30 years ago, because the poor in India are also getting benefited by the upgradation of India. कुछ लोग ये गलत डायलॉग देते हैं that rich are becoming richer and poor are becoming poorer. Poor are not becoming poorer, rich are becoming richer, poor are becoming rich, but rich are becoming richer at a much faster pace, and that is the place where India's absolute poverty is going down and the standard of living is going up, but along with that inequality is also growing up. Do I believe I reach you on this thing? So that is the key to understand. कि अगर कोई आपको बोलेंगे अरे इतना इनइक्वालिटी बढ़ गया तो तुम कैसे कह रहे हो गरीबी कम हो गई है, क्योंकि इन दोनों अलग अलग बातें हैं. इनइक्वालिटी इज अ रिलेटिव मेजर, पॉवर्टी इज एन एब्सोल्यूट मेजर. So it's possible that in absolute terms I have made my poors better off, but in relative terms the rich have become even better off, and then the poors look relatively worse. पहले का इंडिया इक्वल क्यों दिखता था? आपको कुछ लोग बोलेंगे 91 के पहले सब बराबर थे, सब गरीब थे, सब बराबर थे. गरीबी में सब बराबर दिखते हैं. आप किसी के पास पैसे ही नहीं, जिस तरह के जैकेट, जिस तरह के कपड़े आप आज पहन पा रहे हैं, मेरी जनरेशन आपके एज में भी सोच नहीं सकती थी. मैं कपड़ों की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज तो जाने दीजिए. That we could not have thought over it, and belonging to upper middle class India. ये भी नहीं कि मतलब पापा झाड़ू मारते थे या दादाजी कहीं पे कुछ नीचे इनकम पे काम कर रहे थे, ये नहीं था. सुविधाएं नहीं थी भारत में. There was no question of taking it. Second class sleeper was the ideal way to travel for middle class, upper middle class India. AC coaches would come long later. 1980s 80s तक तो AC कोचेस थे ही नहीं ट्रेन में, तो कैसे सफर करेंगे? एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट होता था, जो रिच होते थे, थोड़ा बेटर ऑफ होते थे, वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते थे. सेकंड क्लास में लोग, बाकी लोग ट्रैवल करते थे, AC वगैरह का कोई गुंजाइश नहीं. ये तो लेट 80s में शुरू हुई राजधानी ट्रेन के साथ. कैसे AC ट्रेन ही चलेंगी देश में और बाकी ट्रेन में भी AC कोचेस फिट होंगे. तो जो चीज़ थी ही नहीं वो कैसे मिलेगी लोगों को? आप अमीर भी हैं तो भी नहीं मिलेगी. हाँ, जो सुपर रिच थे, film stars, some politicians and so on, singers etc, उनके पास चीजें होती थी, सुविधाएं बहुत तरह की, because they were very rich. But otherwise India did not have those benefits. So in absolute terms India has gone up, and due to that the poor have also gone up. So the standard of living for poor has surely improved, but relative terms the inequality looks very large, because in relative terms some people have become pretty rich and some others have been left behind. So that is the debate we are entering into now. No, poverty is decreasing at a faster rate. But the point, अब एक बात सोचो, मान लो तुम देश के गरीब हो एक, 1990 में तुम्हारी इनकम 2 रुपया थी, तुम पॉवर्टी लाइन के नीचे थे. मेरी इनकम 20 रुपया थी, मैं तुमसे 10 टाइम्स रिच था, मैं पॉवर्टी लाइन के ऊपर था. अब लिबरलाइजेशन हुआ, तुम्हारी इनकम बढ़ के अब 20 रुपया हो गई, 10 गुना बढ़ गई, तुम पॉवर्टी से ऊपर आ गए. मेरी इनकम 2 लाख हो गई या 20,000 हो गई. अब यू ग्रू एट अ फास्ट रेट, पॉवर्टी भी इरेडिकेट हुआ, इरेडिकेट फास्टर रेट पे हुआ, लेकिन जो रिच थे वो इतना ज्यादा रिच हुए कि उसके बाद भी इनइक्वालिटी ज्यादा दिखने लगी. देखो, रिच तो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं थे, तो अगर मान लो पहले 30% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे, तो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग ऊपर आ रहे हैं, लेकिन रिच जो हैं वो और ऊपर जा रहे हैं, तो वो तो गैप क्रिएट करेगा ही ना. That is the challenge we are having at the moment. So you write the first point in this when I say reasons for rise in inequality. You write
Service-led growth, service-led growth has led to service-led growth has led to concentration of income creation in urban areas and mostly among skilled workers, which has led to rise in inequality. We have already discussed it. If 30% people approximately are in service sector contributing 55% of GDP, and if 45% people are in agriculture contributing 17% of GDP, the inequality will be stark. You understand that? That is our challenge one. And remember, even in service sector, it's not everybody who is growing. There are upper end services which are doing very well. All right, that is again a thing that we see. So the movie stars charging 100 crore per movie. Now that's a phenomenal amount to charge. But when the movie does a business of 500 crore, automatically they get entitled to charge that money. So that kind of income creation is happening. All right, that is the idea. That if you are skilled in a particular work, if you are demanded in a particular work, in economics we have a name for it. I've told you earlier also. We call it the superstar phenomena. So the superstar will be paid more because the superstar attracts the revenue. So that is again, but then what happens is, if the superstar takes the bulk of the money, then automatically the rest left over to pay to the others will become lesser. So that kind of discrepancy is happening. Second, then you write, lack of success in land reforms. Lack of success in land reforms led to reduced agricultural productivity, and therefore reduced income in rural areas. Then you write third, lack of proper skill development has led to growth in unorganized sector labor, which results in low income and inconsistent income. In fact, UPSC had asked you this question in a GS paper once in 2015 or 16, I think. They had asked the GS paper 3. They had said that comment on careless employment and useless employment and how does it create inequality. So see, what is careless employment? Careless employment is when I'm not getting a regular work and I'm not learning anything on work. Then I'm a careless worker. What kind of workers are these? Construction labor. I repeat, two features. I'm not getting regular work and I'm not learning anything on work. I'm carelessly employed. What do these careless workers do now? These careless workers are people like those who work for 1 month as casual labor, another month as construction labor, third month as a fruit vendor. This is careless employment. On the other hand, when you talk about useless employment is where I am working and I may get a regular job,
but it is not adding anything to my productivity. For example, gatekeeper, for example, cook or a driver, their income will never rise beyond a limit. You understand that? Because no matter how good they work or how capable they are, it will be limited by the lack of productivity enhancement. So careless employment and useless employment. Now what is the challenge here? Low productivity means low income. Lack of regular job means inconsistent income. एक तो productivity low है तो income कम होगी. Jobs regularly नहीं मिलेंगे तो inconsistent होगा income. Thirdly, no pension fund, no insurance support, no accident compensation. So social security missing. कोई pension fund नहीं होगा इनका, insurance support नहीं, कोई social security नहीं. That's the third challenge that they will have. On the other hand, workers in the formal sector will have all of these and better, and that increases inequality. कि जो formal sector में है, वो तो better off हो गए, और जो informal sector में फंस गए, वो worse off हो गए. You understand that? So this is the challenge we are looking at again. This is the challenge we are looking at again, inequality wise. I hope everybody gets the point on careless and useless employment. Perfect. You write the next thing then. Low participation rate of women. Low participation rate of women in labor force results in increasing gender inequality. And again, attach it to the social stigma, attach it to the family pressure, attach it to the responsibility of the family. All that is automatically transferred to the women. That the woman has to take care of all that. But that is not necessarily to be done. But that is how we have developed things. हम कभी-कभी आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरे ये सोच है कि हम कभी-कभी अपने गर्ल्स को बड़ा ही गलत कर देते हैं. हम उन्हें बड़ा ही करते हैं, अरे तुम उठ के सुबह अभी नहीं उठ रहे हो ना, जब ससुराल जाओगे सास देखेगी तो पता चलेगा. ये कैसी बात है? एक तो आप बेफालतू मदर इन लॉ से डरा रहे हैं, उनको कुछ डेमन क्रिएट कर रहे हैं, तो एक सबकॉन्शियस में बात होती है सास कुछ खतरनाक चीज होती होंगी. मोर इंपॉर्टेंटली एग्जाम्पल ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि अभी नहीं उठ रहे हो ना, आगे चल के जब नौकरी करोगे तब तो उठना ही पड़ेगा. ये प्रोग्रेसिव एग्जाम्पल होगा. ऐसे बड़ा कीजिए अपने बच्चों को. भाई कहाँ सास ससुर चाचा ताई ला रहे हैं, हो गया वो 19th सेंचुरी बीत गई. मॉडर्न वुमेन का जमाना है, उनको मॉडर्निटी से बड़ा कीजिए. नौकरी करना तुम्हारा काम होगा तो सुबह उठना पड़ेगा क्योंकि नौकरी पे रिपोर्ट करना है. तो ग्रो ही करेंगे सोचते हुए कि अच्छा मुझे नौकरी पे जाना है एक दिन. जब हम सास ससुर चाचा ताई बोलते हुए ग्रो ही करते हैं सोचते हुए मुझे शादी करना है एक दिन. I mean, marriage is not necessarily required. If you feel like marrying, you find a person with affection, marry. Otherwise, why should one marry necessarily? But हमारा सोसाइटी में यूनिवर्सल मैरिज, आपको मैं नहीं रोक रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ कि ये यहीं से सब्जुगेशन शुरू होती है. ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ. कभी बोलते हैं अरे तुम्हें घर में अभी खाना बनाना नहीं सीख रहे हो, घर में कैसे खाना बनाना सीखोगे अपने घर में. वो मत बोलिए, बोलिए अभी खाना बनाना नहीं सीख रहे हो, अगर पोस्टिंग हो गई कहीं ऐसी जगह पे जहाँ कुक नहीं मिला और बाहर का खाना खराब हुआ तो कैसे अपना खाना खाओगे. तो खाना बनाना सीखो क्योंकि उस पोस्टिंग पे खा पाओगे. हर बात में नौकरी का एग्जाम्पल दे दीजिए ना भाई. हर बात में शादी बच्चा हस्बैंड इसी का एग्जाम्पल क्यों दें. ये मेरी सोच है और मैं फिर कह रहा हूँ आप डिसएग्री. मुझे पता नहीं, मेरे वाइफ कभी कभी बोलते हैं तुम्हारी सोच के चक्कर में तुम्हें डॉटर नहीं दी ईश्वर ने. बट आई डोंट नो. सो बट मैं आप लोगों में ही अपनी डॉटर्स देख लेता हूँ. बट इंपॉर्टेंट यही है कि आपको भी इसीलिए सिखाता रहता हूँ दैट सब्जुगेटेड होने का तरीका है ये. मेल्स को हम कैसे बड़ा कर देते हैं कभी कभी, अरे तुम किचन में मत जाओ ये तुम्हारा काम नहीं है. नहीं, अगर खाना उनका काम है तो पकाना भी हो सकता है. दे कैन वेरी वेल गो एंड कुक, क्योंकि ये लाइफ स्किल है भाई. खाना बनाना, स्विमिंग आना, ड्राइविंग करना, ये मेल फीमेल नहीं है, ये लाइफ स्किल्स हैं. आप जा रहे हो उबर टैक्सी में, ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया, कम से कम तुम उसको भी बचा पाओगे और खुद को भी बचा पाओगे क्योंकि तुम्हें गाड़ी चलानी आती है. नहीं आती है तो फंस गए, वो तो मरेगा ही, कहीं धक्का मारेगा आप भी गए. स्विमिंग तो आपको बता ही चुका हूं,
कि पानी बढ़ेगा तो मैं C+I+G+NX करके नहीं बच पाऊंगा। कितना मर्जी जोर जोर से चिल्लाऊं। ऐसे ही खाना बनाना लाइफ स्किल है। अगर खाना बनाना आता है, कोविड पैंडेमिक भी लग गया, सारी जो दुकानें बंद हो गई, मैं अपना खाना बना के खा लूंगा। तो आप समझिए ये बात, ये लाइफ स्किल, इसमें बॉय गर्ल जेंडर इसका कोई लेना देना नहीं है। सो इफ वी कैन जस्ट स्टार्ट चेंजिंग दैट अ लिटिल बिट, वी विल हैव मोर चिल्ड्रन इन द लेबर फोर्स, मोर विमेन इन द लेबर फोर्स। चिल्ड्रन इसलिए मेरे मन में आया क्योंकि एक और दिक्कत होती है, द होल बर्डन ऑफ चाइल्ड बियरिंग ऑन द विमेन। The father should wake up when the child is crying half of the time, and half of the time the mother should wake up. If both of them cannot wake up at the same time, मदर को उठा देना चाहिए, उठो भाई तुम्हारा ही है, कहाँ सो रहे हो, संभालो इसको, अकेले क्यों संभाले भाई। ये डायलॉग कैसे चलेगा कि कल सुबह मेरा ऑफिस है, कल सुबह तो विमेन का भी ऑफिस हो सकता है, तो उस केस में कैसे ये चलेगा डायलॉग कि नहीं मेरा ऑफिस है इसलिए मैं नहीं उठूंगा। और ऐसे में फादर्स फिर क्या होता है, मैं उठूंगा नहीं मेरा ऑफिस है, मैं बात ज्यादा नहीं कर सकता मेरा ऑफिस है, फिर 60वें साल 70वें साल में बोल रहे होते हैं पता नहीं बच्चे मम्मी से तो इतनी बात होती है हमसे बातें नहीं होती है, तुमने की ही नहीं कभी। वो चाहते हैं बात करना लेकिन कुछ मिक्स ही नहीं है, कहाँ से शुरुआत हो। पूछते भी हैं तो खतरनाक सवाल, पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है पापा, भागो भाई। कैसे कैसे सवाल पूछे, मैं नहीं जानता आप क्या करते हैं, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं। जो कुछ भी मैंने कहा, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, दैट आई वुड बी, इवन दो माई फादर वॉज अ वेरी लिबरल पर्सन, वेरी जोवियल ऑल्सो, बट द प्रॉब्लम वॉज ही वुड नॉट टॉक टू अस। मे भी उनको लगता था हम इस लायक नहीं है। लेकिन वो हमसे बात नहीं करते थे कभी भी ज्यादा। इट वुड बी ऑल नॉर्मल टॉक, और हमें अगर कुछ मांगना भी होता था तो मदर के थ्रू बोलते थे। बड़े होने के बाद, इवन व्हेन आई वाज वर्किंग, इफ पापा इज होम, इफ आई हैव टू टेक देम फॉर अ डिनर, आई टेल माय मॉम टुनाइट देयर इज अ डिनर, टेल पापा प्लीज। मेरी औकात ही नहीं थी कि मैं सीधा जाकर उनको बोलूं कि पापा आज आपको डिनर पे मेरे साथ चलना है, सवाल ही नहीं था, मेरे हाथ पैर फूल जाएंगे। बाद में व्हेन आई वाज मैरिड, माय वाइफ वुड डू इट वेरी कॉमनली बिकॉज शी वाज वेरी फ्री विथ हर फादर, सो आई वुड टेल हर दैट ओके यू गो, एंड माय फादर वुड गिव हर अ लॉट ऑफ अफेक्शन। बट मेरी फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं पापा के सामने जाऊं और बोलूं पापा चलिए भाई खाना खाने चलते हैं। पापा आ गए तो आवाज ही बंद हो जाती थी। बातें होती थी, नॉर्मल बातें होती थी, डिस्कशंस भी होते थे, पॉलिटिकल डिस्कशंस एंड ऑल, बट जोक्स एंड ऑल, वेल ही नेवर जोक्ड विथ अस, आई कुड नॉट जोक विथ हिम। सो दैट वाज माय लिमिटेड पॉइंट, दैट दैट इन दैट केस देन इफ आई कैन नॉट टॉक टू हिम बट आई वाज मोर फ्री विथ माय मदर, तो मैं उनके साथ घुस के बात करता था। तो बोलते भी थे वो कि अरे किचन में लगा रहता है माँ के साथ, इधर भी आके बैठा कर। मैं बोलता भी था मम्मी को क्या बैठूं, क्या तारीख, क्या बात करूंगा वहाँ। So this was, and my brother was worse. मैं तो कम से कम पापा के सामने बैठता था, उनसे बात करता था। भैया तो पापा घर में आए तो ऑफिस में ही रहते थे दिन भर। रात को 10 साढ़े 10 लौट के ही आ रहे हैं। पापा बोलते थे लेट हो गया तुझे, हाँ पापा बस खाना खा के सोने जा रहा हूँ। तो हिम्मत ही नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू हैपन। माई पॉइंट वॉज जस्ट दैट fathers are equally loving, equally affectionate, so they can express them a little, but more important, take the responsibility of the kid that makes the kid feel close. तो ये आपको समझा रहा हूँ, ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा। जैसे ही मेल को दिमाग खराब होगा कि भाई एक बच्चा बड़ा करना है, अगली बार से दूसरा बच्चा होगा ही नहीं। उनको पता होगा नहीं भाई बच्चा ऐसा दिमाग खराब करने वाला है मेरा, तो ये इम्पोर्टेंट। और अगर होगा तो वो कॉन्शियस होंगे कि अच्छा ठीक है मैं दिमाग खराब करने को तैयार हूँ। तो ये आपको समझा रहा हूँ, किड्स शुड बी बॉर्न आउट ऑफ अफेक्शन, मैरिज शुड हैपन आउट ऑफ अफेक्शन, देन इट्स एन अफेक्शनेट सिस्टम। That is what I'm saying, and that's affectionate systems are efficient systems. Social impact cannot be isolated when you are talking economic impact. तो जो आप इकोनॉमिकली इम्पैक्टफुल है वो सोशल, आपके पीछे जो सोसाइटी है वो उनके कारण हो जाते हैं। that is the point I'm again trying to teach you. Okay, you write one more then. You write the productivity of MSME. This is the 5th point? Yes. Yeah, the productivity of MSME, especially in rural areas, is much lesser compared to the large scale industries पूरा सेशन बीत गया। मैं एक दिन वो देखना चाहता था जब बॉटल ना गिरे, तुम गिर के लुढ़कते हुए इधर आ गए। लुढ़कते लुढ़कते सीढ़ियां चढ़ के यहाँ आ गए। सर अब मैं जंप करूंगा यहीं पे जब तक आप पढ़ाएंगे।
Anyways, मैं वही सोच के हंस रहा था. आप सोच नहीं सकते मैं क्या क्या weird बातें सोचता हूँ. All right. So compared to large scale industries, you wrote that? In urban areas, large scale industries in urban areas, which increases inequality. Which increases inequality. I hope you understand that. Especially, in the consumer goods sector of MSME, the trouble is even more. All right, in the ancillary units and component suppliers, they are still better off. But in the consumer good industry that MSME produce, they are very less efficient. And then one more thing you write, ये आखिरी है. You write, आखिरी है, बता दिया मैं. इससे पहले कि तुम सच में मेरी बात को सच कर दो. ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ लुढ़कता हुआ. All right. So you write in that the infrastructure differential between rural and urban India, the infrastructure differential between rural and urban India, comma, including civic amenities, also results in lack of equity among rural and urban regions. Okay, you just give a heading for today. You write policies to achieve inclusive growth. जो सरकार ने किया वो आप लिख चुके हैं. मैं एक normal theory दूंगा आपको that what are the policies that can be used to achieve inclusive growth. So policies to achieve inclusive growth. We'll begin from here tomorrow. I'll see you tomorrow at around 2:45 then. Thank you. People online, I will leave you here today. I'll not be able to take your doubts here at the moment. I will see you tomorrow at 2:45 then. Thanks a lot.